All right, so it looks all set. Let's start. Let me share my screen and then we'll start the very interesting session. So let me know if you guys are able to see my screen. Can someone confirm if it is visible? Yes, visible, Yeah, sir. it's Yes, sir, visible. visible. Thank you so much. Thank you so much. All right. Thank you. All right. So as we are starting the officially this Fortinet session, right? So I hope you guys are very excited, right? Equally, I am very excited to just work with you all. So ये सेशन हमारा हिंदी and इंग्लिश बोथ में रहेगा, right? So whatever you guys feel, right? Just let me know कि किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोग हो, either in English or English or like the mix kind of stuff. So I'm okay with everything, right? So let's start. So today, basically, we are going to cover some very interesting because we have done a lot of discussion about the FortiGate firewall. We done discussion about the what is a Fortinet, what is a FortiGate, and we understand few products as well of the Fortinet, right? So one of the product that is the FortiGate we have, for which we are going to start, right, our all journey for the learning this particular course, right? So Fortinet, who is just joined right now, Fortinet is a company, right? And that product is known as the FortiGate. So the firewall which we are going to cover, that is a FortiGate firewall. That is the product. So firewall name is basically FortiGate, जिसको हम पूरा deep dive करेंगे and we'll understand how it is going to work, what all feature is going to happen, and what is different use case is going to happen to just protect your network, right? So this kind of the stuff we are going to understand throughout the session. Okay. So before I start, right, if anyone having any doubt regarding the previous two sessions where we just have the basic discussion about the product, or any other mind, if you're having the question related to any other stuff related to this FortiGate or Fortinet, just feel free to ask, because I'm not going to cover about the history and all, because these are just general awareness things which I covered in the previous session. So I can cover, there is no problem, but I just wanted to give you the opportunity so you guys can just go through those all discussion, or in between while doing the full flash training, we'll have the one round of discussion in middle of the trainings, so you guys having the again the brief understanding about the history, about the product and all. But still, if anyone having any question, please feel free to ask. Yes, good evening, Dhirendra. So I can see a lot of people are here. So if anything, anyone have to ask, please feel free. Else I'll start very interesting session that is related to the day zero configuration, right? And this is not a demo class. And this is a day zero class where we will do the real configuration of the FortiGate firewall. So to make this session interesting, last two session where we just covered about the demo, we just discussed about that, product history, product portfolio. But today more we are going to talk about the firewall products, different vendor जो हमारे पास हैं, and we'll do the real time configuration, step by step. All configuration will do that. How it is going to be happen, right? So those all configuration is going to be discussed. All right. So let's start. Okay. So what we are going to do, let me just log in the lab. So once we start the session, right, we'll have to understand how basically this all lab is going to be covered. So basically you'll get the rack access. Likewise, this is a rack, right? And after logging this rack, right, you'll have to put your username and password. Right now I'm using the admin username and password, but you guys have to use your own username and password. And after using this username and password, you just have to log in. So I'm in login. So while logging, one more thing, you just have to be very careful. Once you log in, you have to select the HTML console, not default console, right? So once you put the username and password, right, and that login, then you just have to put this
console. So we have the day zero firewall configuration where we don't have anything. हमारे पास कुछ भी नहीं है where we can do the configuration. So how my journey is going to be started? So let's suppose आप एक security engineer हो, you are working in the NOC. So पहला task अगर आता है कि you have to configure the firewall. देखो मैं बड़ा in middle of the configuration start कर रहा हूँ, but that is a more important. We can go and discuss about the packet flow. We can discuss about the different deployment method of the firewall. But I'm just going with the very scratch where day zero means. Let's just suppose you having the full understanding of the concept, right? So how basically you are going to deploy this firewalls, right? So deployment means the very new firewall. So first you have to understand how my firewall looks like and how it is going to be deployed. So सबसे पहले I can see AS Singh is asking, sir, when will get the access and the URL info? So another document. So definitely, Mr. A Singh, uh, Mr. Singh, like once the everyone complete the enrollment, some are already completed, then definitely you'll get the all the information through your executives, right? So that information will going to be provided very soon, right? So first you have to visualize how basically firewall is look like. So any product if you're going to purchase from the market, it is going to look like in this way. So if you go in the Google, just I just wanted to visualize how basically physically this FortiGate firewall is look like. You just have to go here. Just give me 1 minute. Okay, so how this is going to be happen? So basically, yeah. So you just go in the image, right? After going image, you can see we having a different boxes. You can see this is the how physically firewall is going to look like. So like with the router, like with the switch, right? We having this firewall. So if I just maximize it, you can see here. So this is the model, one of the model. That is the FortiGate model we have. That is a FG200E. This is the one model. Similarly, you might be find, right? Similarly, you might be find different kind of the models. So which models could be? So I'll explain those models because I have the product history list here. So I have the all models available. Likewise, कि 40 manager क्या हमारे पास है, 40 analyzer क्या हमारे पास मॉडल का अवेलेबल है, 40 सीम क्या हमारे पास अवेलेबल है, राइट? एंड along with that all firewall models जो भी FortiGate के firewalls है, top selling models क्या मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है. So those things I have already, right? And I'm going to explain step by step after covering the some basic fundamental of the firewalls. So सबसे पहले आप फायरवॉल खरीदते हो तो देखो जैसे आपके पास राउटर होते हैं, स्विच होते हैं, वैसे ही कुछ ये दिखता है प्रोडक्ट. इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ कुछ कंपोनेंट इस तरीके से दिखेंगे कि मान लेते हैं कुछ आपको यहाँ पोर्ट्स दिख रहे हैं, राइट? यू गाइस कैन सी दीज आर द पोर्ट्स. ये यहाँ से probably you will find, let's see why it's not working. For some reason and is not working. Why? Let me see. Let me just start this pen. Just give me 1 second. Okay, let me just start it again. Okay, so let me try. Should work now. Yeah, it's working. So what I'm saying, you can see these are the different ports you can see here, right? These are the ports available. So these ports can be used for the LAN connections,
एंड कुड बी द वैन कनेक्शंस। सो आपको अगर लैन कनेक्शन करना है तो भी आप इस पोर्ट को यूज कर सकते हो, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द वैन दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी, वी कैन यूज दिस पोर्ट्स, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैन के लिए या सिर्फ वैन के लिमिटेड, नहीं, ये कर सकते हैं। और ये पोर्ट्स जो आपके होंगे, दिस कुड बी द टू टाइप ऑफ पोर्ट्स, या तो ये आपके कॉपर होंगे, राइट, या आपके ये फाइबर होंगे। सो फाइबर के केस में क्या लगाना पड़ेगा आपको, एसएफपी लगाना पड़ेगा, राइट। एसएफपी जिसके थ्रू हम फाइबर को एक्सटेंड करते हैं। देखो ये एसएफपी पोर्ट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे, ये सारे एसएफपी के पोर्ट्स हैं, यहाँ पे आप एसएफपी लगा सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट गो एंड एक्सटेंड द थिंग्स, राइट। सिमिलरली ये आपके RJ45 केबल्स हैं। इन RJ45 केबल्स के साथ आप बेसिकली क्या कर सकते हो, बेसिकली यू कैन कनेक्ट एनी कॉपर केबल्स जिसको आप लैन केबल बोलते हो, और उससे आप अपनी कनेक्टिविटी को एक्सटेंड कर सकते हो। सिमिलरली आपको यहाँ पे कंसोल केबल मिल जाएगा, कुछ एलईडी के स्टेटस मिल जाएगा, और कुछ आपका यूएसबी स्टिक्स भी मिल जाएगा। लेट मी फाइंड द सम बेटर पिक्चर, सो आप लोग को थोड़ा सा और बेटर विजिबिलिटी से मिले। लेट मी सी, कोई बेटर व्यू है क्या इसका, या लेट मी सी हियर। सो यहाँ पे देखो आप इस फायरवॉल पे देखो अभी, सो यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे देखो अभी आपको बहुत सारे कनेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, राइट। थोड़ा सा आप इसको विजुअलाइज भी कर पा रहे हो कि यहाँ पे कंसोल केबल भी है। सो कंसोल केबल, आई थिंक आप सबको पता होगा कि व्हाई वी नीड अ कंसोल केबल। कंसोल केबल के थ्रू आप फायरवॉल का CLI एक्सेस लेते हो, राइट, जिसके थ्रू आप फायरवॉल को बेसिक इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे कुछ वैन पोर्ट डेडिकेटेड है जिसको आप वैन की तरह यूज कर सकते हो, वैन 1 वैन 2, राइट। यहाँ पे आपके DMG पोर्ट्स भी हैं, राइट, जिसको आप यूज कर सकते हो। माइट भी हर मॉडल पे ना लिखा मिले आपको, कुछ मॉडल पे आपको प्लेन ही मिल जाए, और ये भी कुछ बिना नेमिंग के पोर्ट्स हैं, इसको भी हम यूज करते हैं लैन या वैन की तरफ। बट कुछ स्पेसिफिक पोर्ट भी आप डिजाइन किए रहते हैं कुछ कुछ फायरवॉल पे, जिसपे आपको लैन या वैन के लिए या DMG के लिए आप स्पेसिफिक यूज कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पोर्ट्स दिखेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट पोर्ट्स यू कैन डू योर ऑल कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट। इसके साथ साथ इसमें आपको यूएसबी पोर्ट, जिसके थ्रू आप कोई भी फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो, सो यू कैन डू द ऑल फाइल ट्रांसफर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपको iOS कॉपी करना है, कोई आपकी लाइसेंस फाइल आपको डालना है फायरवॉल के अंदर, या उससे बाहर निकालना है, राइट, कोई रिपोर्ट निकालनी है, तो वो सारी चीजें भी आप यूएसबी के थ्रू कर सकते हो। मतलब किसी तरह का कोई फायरवॉल से फाइल एक्सचेंज करना चाहते हो, देन यू कैन डू वाया दिस यूएसबी पोर्ट, राइट। दिस इज सप्लाई, दिस इज द पावर सप्लाई, यू कैन सी सम एलईडी स्टेटस। ये सारी चीजें आपको फायरवॉल के ऊपर मिलेगा, राइट। यू जस्ट कैन विजुअलाइज फिजिकली हाउ फायरवॉल इज गोइंग टू लुक लाइक। सो फायरवॉल आपको कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। एक बॉक्स होगा, जैसे नॉर्मल राउटर होता है, नॉर्मल स्विच होता है, ऐसे ही कुछ आपको बॉक्स होगा। इस बॉक्स के ऊपर इसका नाम होगा फोर्टीनेट का, और इसके नीचे फोर्टीगेट लिखा होगा, और उसका मॉडल नंबर लिखा होगा, राइट। ये मॉडल नंबर कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एन नंबर ऑफ द मॉडल्स। वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा मेरा मॉडल है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, और ये मॉडल मैं क्यों यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सारा मॉडल यूज कर लोगे, बट आपकी बिजनेस नीड के हिसाब से यू जस्ट हैव टू यूज दिस मॉडल नंबर, राइट। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ देता हूँ क्या क्या मॉडल नंबर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, फिर उसके अंदर क्या क्या कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है डेटा सेट पे, अगर हम और डीप डाइव करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक मॉडल नंबर के बारे में। जैसे FortiGate 7000 F सीरीज का फायरवॉल है, इट इज लाइक द, you can see the chassis based firewall, we having the lot of slots, इसके पास बहुत सारे slots हैं, और इट्स इज गोइंग टू डिप्लॉय इन द लाइक द मेजर डेटा सेंटर्स, जहां पे आपको बहुत हाई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ड्रिवन नेटवर्क टू द लार्ज इंटरप्राइज नेटवर्क वहां कवर करना है, देन वी कैन डिप्लॉय सच काइंड ऑफ फायरवॉल। बट ऐसा नहीं है कि ये फायरवॉल आप खरीदने जाओगे तो बहुत सस्ता मिलेगा, इट्स अ वेरी कॉस्टली फायरवॉल। सो यू हैव टू वाइजली डिसाइड विच फायरवॉल इज बजट फ्रेंडली and also meeting your all security requirement. This is the most important thing you have to understand. If you are not able to understand those things, you are going to waste your money, waste your resources. अगर आपने फायरवॉल खरीद भी लिया, आपके यूजर पे 100 लोग हैं, तो आपका रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, देयर इज नो यूज। आपने इतना पैसा लगा दिया बट इट्स यूजलेस, राइट। जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि आप, यू आर द हस्बैंड वाइफ एंड यू हैविंग 1 or 2 kids, राइट। सो यू आर द 4 members, बट आपने 4 BHK एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लिया, राइट। सो यू कैन नॉट गो एंड स्टे एवरी रूम अनलेस अनटिल आपके ज्वाइंट फैमिली हो, और आपके पेरेंट्स भी साथ रह रहे हैं, या कुछ और भी फैमिली मेंबर के लोग साथ में रह रहे हैं, सिस्टर वगैरह रह रही हैं, तो दैट रिसोर्स इज गोइंग टू यूटिलाइज, एल्स आपका वो रिसोर्स पूरा वेस्ट हो रहा है। आप एक तो बहुत पैसा दे चुके हो, और आप उतना यूटिलाइज भी नहीं कर पा रहे, और उसको आपको मेंटेन करने में ज्यादा पैसा खर्च होगा। सिमिलरली आपको जब फायरवॉल खरीदना है तो आपको वाइजली डिसीजन लेना है
माई फायरवॉल रिसोर्स कैन बी यूटिलाइज, एंड मैं किस तरीके से अपनी सारी सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स है उसको मैं मेंटेन कर सकता हूँ. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन, राइट. सो इसी तरीके से अगर मैं जाता हूँ डेटा सीट्स पे, सो यू गाइस कैन सी दैट, राइट. क्योंकि अभी हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं तो थोड़ा सा उससे पहले हमारा कुछ बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए. प्रोडक्ट मैट्रिक्स है दैट इज रिलीज इन दिस नवंबर इटसेल्फ, राइट. सो इट्स वेरी लेटेस्ट, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना मैं दिखा रहा हूँ. इसी महीने की प्रोडक्ट मैट्रिक्स हमारी है जो 2023 की है. And you can see there are the products: FortiGate, 40F, FortiGate Firewall, FWF is a firewall, 60F, 70F and 80F. These are the firewalls. अगर इसके मॉडल देखोगे तो 90G भी है, 100F भी है, 200F भी है, 400F भी है. नीचे भी मॉडल्स हैं, 900 सीरीज, 600 सीरीज के अंदर भी आपके पास हैं, 2200 सीरीज के भी, 1800, फिर 3200 आपके पास हैं. फिर आपके पास 3500, 4000 सीरीज के पास है. फिर आपके 48, 663, 7000 जो भी मैं दिखा रहा हूँ ये डेटा सेट, ये 7000 सीरीज के आप देख रहे हो, राइट. सो इस तरीके से आपके पास फिर और भी अब ये तो फायरवॉल हो गए जो हाईएस्ट सीरीज के आपके 7000 सीरीज इज हाईएस्ट लार्जेस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. सबसे पावरफुल फायरवॉल हमारे पास 7000 सीरीज के हैं. लेकिन उससे नीचे वाले फायरवॉल ये सारे हैं आपके पास, राइट. तो थोड़ा सा इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखो. किसी और फायरवॉल को अगर आपको कंपेयर करना है तो किस तरीके से आप उसको कंपेयर कर सकते हो. मैं इस फायरवॉल को क्यों खरीदूं, मैं एक फायरवॉल को क्यों खरीदूं, एंड व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स आई एम गोइंग टू गेट बाय परचेजिंग दिस फायरवॉल. आपको एक कार खरीदनी है, सो आप एसयूवी क्यों खरीदो, आप हैचबैक क्यों खरीदो, आप सीडान क्यों खरीदो. आपको लॉजिक पता होना चाहिए ना. ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है या मेरे पैसे हैं तो मैं जाके एसयूवी खरीद लूं या सीडान खरीद लूं. ऐसा नहीं, कुछ तो लॉजिक आप लगाओगे ना. व्हाट इज अ नीड, क्या आप चाहते हो, आपको ये कोई ऐसी कार क्यों नहीं खरीदना चाहते हो कि जो मतलब आपके लिए यूजेस में ही ना आ पाए, राइट. जैसे किसी ने थार खरीद लिया, थार और स्टंट मारना तो खरीद लो, कोई बात नहीं है. बट दिस इज नॉट गोइंग टू मीट योर ऑल रिक्वायरमेंट्स. हो सकता है कि उतनी कंफर्टेबल ना हो थार, बट इट इज टसन, आपको टसन मारनी है तो यू कैन परचेज, आपके पैसे हैं तो. सो टोटली डिपेंड. सो जैसे ये फायरवॉल है, जैसे मैं सबसे बेसिक फायरवॉल, छोटी फायरवॉल की बात करता हूँ, तो यू कैन सी 440F मॉडल ऑफ द फायरवॉल है. इसमें फायरवॉल की मैक्सिमम थ्रूपुट्स जो आपकी है दैट इज गोइंग टू बी like 5 Gbps, right, across all like the communications. So in this 5 Gbps throughput, what is the throughput means maximum आपका पैकेट इस स्पीड से फायरवॉल प्रोसेस कर सकता है. मतलब कि मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है, किसी डिवाइस का थ्रूपुट इज मैक्सिमम कैपेसिटी. इट्स प्रोसेसिंग ऑल काइंड ऑफ ट्रैफिक, चाहे वो इन हो रहा है या आउट हो रहा है, किसी भी तरीके का ट्रैफिक आ रहा है, दैट इज गोइंग टू जस्ट डाइजेस्ट टिल द 5 Gbps. अगर आप वीपीएन आईपीसेक बनाते हो, आईपीसेक टनल बनाते हो, राइट, दैट इज गोइंग टू गिव मैक्सिमम थ्रूपुट अप टू 4.4 Gbps. यू कैन सी. अगर इस पे आप किसी तरह का और so Dhirendra is asking, sir, IPsec throughput or port throughput? No, this is the IPsec tunnel throughput. It's not port. IPsec tunnel means IPsec tunnel के थ्रू आप मैक्सिमम इतना आप कम्युनिकेशन कर सकते हो. That is talking about the tunnel. IPS, right? इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, राइट. अगर कोई आपको नेक्स्ट जनरेशन जो भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं, वायरसेस होते हैं, कोई भी थ्रेट्स होता है, राइट, अगर उनको प्रिवेंट करना चाहते हो तो उसकी मैक्सिमम थ्रूपुट यू कैन गेट 1 Gbps, राइट. थ्रेट प्रिवेंशन जो भी है 600 Mbps आप गेट कर सकते हो. नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल थ्रूपुट आपका 800 Mbps हो सकता है. लेकिन जैसे जैसे आप मॉडल बढ़ाओगे, राइट, यू सी द फिगर्स आर गेटिंग इंक्रीज्ड. यू कैन सी अगर इस कॉलम से अगर आप इस कॉलम मूव हो गए तो आपका थ्रूपुट भी बढ़ रहा है. किसी न किसी सेक्शन में आपका यहाँ भी डेटा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ हो रहा है, यहाँ पे ये बढ़ गया, बट कुछ चीजें आपका सेम भी रह रही हैं. जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो बढ़ रहा है. तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी फायरवॉल की लेटेंसी कितनी आएगी इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर. कंकरेंट सेशन, सो अभी जितनी भी फायरवॉल हमारे आती है दैट इज ए स्टेटफुल फायरवॉल, राइट. सो स्टेटफुल फायरवॉल का मतलब ये होता है कि दे आर गोइंग टू मेंटेन द स्टेट्स. मीन्स एक सेशन टेबल बनाती है. जैसे आप पोलो अल्टो पढ़ते हो या आप चेक पॉइंट पढ़ते हो या आप सपोज पढ़ो या फोर्टिनेट हम पढ़ रहे हैं, एवरी फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, सिस्को इज ऑल्सो, everyone is going to make the session inside of the firewall, and based on the session जो भी आपकी communication होता है वो आपका एक तरीके से हर एक फ्लो के लिए सेशन चेक करता है. चेक करने के बाद इफ इट इज अलाइन विथ योर पॉलिसी, अलाइन विथ योर राउटिंग, अलाइन विथ योर नेट एंड एवरीथिंग इज इन प्लेस, देन सेशन इज गोइंग टू बी क्रिएटेड. और उसके बाद आपका कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी थ्रू फ्रॉम योर नेटवर्क, राइट. तो इस तरीके से हमारा कंकरेंट सेशन. तो कितना सेशन, अगर मान लेके चलो कि ये हमारे पास ऑलमोस्ट 7 लाख सेशंस हैं, राइट.
सो इस 7 लाख सेशन के अंदर मान लेते हैं कि आपके पास कंपनी में 100 एम्प्लॉय है, राइट? एंड इस 100 एम्प्लॉय बहुत सारे एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, तो एट अ टाइम बहुत सारे सेशन बन सकते हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि आपका पूरा खत्म हो जाए। And I have the question from the Pradeep Patil, how many tables created FortiGate? So, which table? We just have the one session table. We having the NAT table, we having routing tables, we having the ARP table. So we having a different kind of the requirement. Based on that, the table is created for a different scenario. Application, DNS lookup table we have, right? The cache going to be created. All the application learning URL filtering that cache table is going to be created. So we having a lot of kind of table, but we are talking about the session table, which is going to be created based on the available routing, based on the available NAT policy, based on available security policy, then based on the port and protocol number and interface, the session is going to be created. Six tuple is going to be there, and based on these all six tuple, the session is going to be created. This is the basic funda. You can just make as a thumb rule. So session is the one fundamental rule where if your packet is going to hit first time in the firewall, so आपका वहां पे सेशन नहीं होगा क्योंकि आपका पैकेट नया है। लेकिन once the packet is going to process, means आपका एक यूजर आया, right? This is one user, right? And this is your FortiGate or any firewall. Just think about this is a firewall. ये पैकेट यहाँ पे हिट हुआ, इसको कहीं डेस्टिनेशन पे जाना है, could be the internet. So इसका एक सोर्स आईपी एड्रेस होगा। जस्ट थिंक अबाउट दिस इज द सोर्स आईपी एड्रेस 1.1। इसको जाना है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पे, जैसे इसको थिंक अबाउट कि 8.8.8 पे जाना है। सो इस पे जाने से पहले जैसे ही ये इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा, तो कैसे पैकेट फ्लो होगा, सो विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप क्या पैकेट फ्लो होगा, कैसे उस आईपी को वो चेक करेगा, फिर कैसे वो पूरा स्टेप बाय स्टेप सेशन को लुकअप करेगा, कैसे वो एप्लीकेशन लुकअप करेगा, एप्लीकेशन कंट्रोल करेगा, फिर वो कैसे इंस्पेक्शन करेगा पैकेट को, देन इट इज गोइंग टू बी डेस्टिनेशन। दैट इज गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, पैकेट फ्लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, डोंट मिस दैट क्लास, दैट इज गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग। FortiGate firewall packet flow in very deep dive, so you'll understand each and everything in very detail. So अभी उस पे हम नहीं जाते हैं, but any packet is going to be land to the firewall. First time packet land कर रहा है, इस firewall के पास इस packet की information नहीं है कुछ भी, because this source is oriented very first time packet. So what is going to do, the best thing it is going to check the routing, हमारे पास routing है कि नहीं है। राउटिंग चेक किया, क्या हमारे पास कोई नैट चाहिए इसके लिए, सोर्स नैट, डेस्टिनेशन नैट। बेसिकली इट इज गोइंग टू चेक फर्स्ट डेस्टिनेशन नैट, एंड देन व्हाई इट इज गोइंग टू चेक फर्स्ट डेस्टिनेशन देन routing, I'll tell you the reason later stage. What is the logic behind it, why NAT is going to always check destination NAT first then routing? There is a like the foolproof region, okay? And then your security policy. So NAT policy, security policy, these two are the different term, आपको इसमें मिक्स नहीं करना कभी भी। NAT पॉलिसी आपका NAT पॉलिसी होता है, सिक्योरिटी पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी, आप इसको ACL समझ सकते हो, राइट? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है पॉलिसी, ठीक है? तो ये सारी चीज चेक हो गई। चेक होने के बाद फायरवॉल इज गोइंग टू क्रिएट अ सेशन, और फायरवॉल मेरा सेशन क्रिएट कर लिया, वो सेशन टेबल बना लिया। अब जैसे ही मेरे पास सेशन टेबल यहाँ बन गया, अब यही पैकेट सेम टाइम आएगा दोबारा फायरवॉल के पास, तो ये सारी चीजें चेक नहीं होगी। इट इज जस्ट गोइंग टू कंसल्ट विद द सेशन टेबल, डू आई हैव द अवेलेबल सेशन फॉर दिस सोर्स एंड डेस्टिनेशन? अगर आंसर इज यस, देन द राउटिंग नैट एंड पॉलिसी नेवर गोइंग टू बी चेक, द पैकेट इज डायरेक्टली गोइंग टू फॉरवर्ड टू डेस्टिनेशन। सो ये हमारा सेशन टेबल का एक ब्रीफ आइडिया हो गया। सो कितने सेशन मेंटेन कर सकता है? इतने 7 लाख सेशन इज गोइंग टू मेंटेन, बट ऐसा नहीं है कि दुनिया में इतनी सेशन हमारे पास है। मतलब कि इतने ही हम कर सकते हैं, ये बहुत छोटा नंबर है, ट्रस्ट में, क्योंकि आपके पीसी से हजारों सेशन बन सकते हैं। यू नेवर रियलाइज आपकी कंपनी में आपके एक पीसी से हजारों सेशन बन सकते हैं, क्योंकि यू आर जस्ट वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, यू आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो, यू आर जस्ट इंटरेक्टिंग विद द इंटरनेट, इंटरेक्टिंग विद द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, इंटरेक्टिंग विद सम काइंड ऑफ द इंटरनल डेटा सेंटर बेस्ड एप्लीकेशन, यू आर ओपनिंग द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यू आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ एट द सेम टाइम। सो ये बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, एंड you never realize, right? But all the connection is going to back and forth from the firewall, so firewall have to understand their capacity. अगर मैं 40 kg उठा सकता हूं, अगर किसी ने मुझे दे दिया आप उठाओ इसको 70 kg, तो how can I do that? It's not possible. I will die, right? Definitely I will die. So this is not my capacity. So you have to figure out the right capacity people who can just cater the 70 kg load. So similarly, how many sessions you have, so more powerful firewall you purchase, more money you will put, you will get the more kind of the features.
firewall policies, how many you can create firewall policies? 5,000, 5,000. So you will create the 5,000 firewall. You can create the new session per second. How many you create? 35,000, 45,000. You can see here. You can see the SLVPN throughput. How many means the SLVPN? What is SLVPN? Like you are using the 40 client, right? You are just making kind of any kind of the VPN connectivity for the remote home users. So how many throughput I can get from there? So this is the like the throughput maximum I can get with these products. But I want more throughput. I want more speed. So what I can do? I have to jump in the different vendor fire means different model of the firewall with the same vendors. Like यहाँ पे देखो यहाँ पे 4090 में गए तो सारे फिगर चेंज हो गए आपके, सारे फिगर चेंज हो गए। देखो मिलियंस में बात होने लगे आपके यहाँ पे 7 मिलियन चला गया, 3 मिलियन चला गया। एंड यू कैन सी सेशंस पर सेकेंड्स, यू कैन सी दीज आर द हाई एसएसएल थ्रूपुट, देखो ये भी हाई हो गया। एप्लीकेशन कंट्रोल देखो, तो वर्चुअल डोमेन मींस कितने आप वर्चुअल राउटिंग कर सकते हो, कितने राउटर बना सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे अर्लियर यहाँ पे देखो आपके पास इनमें वर्चुअल डोमेन भी 10 बना सकते हैं, सब में 10 ही है, राइट। बट दिस मैक्सिमम वर्चुअल राउटर बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो बाकी पैरामीटर्स जो है, इंटरफेसेस देखो यहाँ पे, अब इंटरफेसेस जैसे ही आप हाई एंड फायरवॉल पे जा रहे हो तो यहाँ पे इंटरफेसेस आपको 8G इंटरफेस है। बट जैसे ही आप जाओगे 2x 10G इंटरफेस है, मतलब अगर 10 गिग की सर्किट चाहिए आपको तो वो भी आप इस पे टर्मिनेट कर सकते हो। लेकिन इसे फायरवॉल पे नहीं कर सकते हो आप, 5 गिग के सिर्फ 5 ही इंटरफेस है इस पे। लेकिन अगर आप और भी नीचे फाइल जाओगे तो इसमें देखो 25G के 4 सर्किट इस पे लगा सकते हो आप। मतलब एक टाइम पे एक ही सर्किट पे 25 Gbps डेटा को आप ले सकते हो और उसको एक्सचेंज कर सकते हो। 10G का चाहिए तो 4 सर्किट लगा सकते हो, राइट। यू कैन सी 200 गिग की भी सर्किट इसमें लगा सकते हो। सो दिस इज द ब्यूटी, राइट। मोर मनी यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, मोर फीचर यू आर गोइंग टू गेट। सी डेटा सेट आप लोग को थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा, थोड़ा इसको अपने प्रोडक्ट हिस्ट्री में रखना पड़ेगा, क्योंकि यू आर गोइंग टू लर्न द FortiGate फायरवॉल, राइट। सो आपको FortiGate के फायरवॉल में एक अच्छी नॉलेज रखनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के बारे में, उसके सेशंस के बारे में, उसके पोर्टफोलियो के बारे में। ताकि कई बार अगर क्या होता है कि अगर प्रीसेल्स में आपकी जॉब लगती है इन फ्यूचर, सो दीज आर द पैरामीटर इज गोइंग टू हेल्प यू टू ड्राइव योर ऑल करियर। सो अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, सो यू आर गोइंग टू बी वेरी सफर। सो आई वुड सजेस्ट कि आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज, जैसे मैं पोलो अल्टो भी बताता हूँ कि पोलो अल्टो के हर एक फायरवॉल के फीचर के बारे में आप जरूर जानो थोड़े बहुत, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाए कौन से मॉडल फायरवॉल पे काम किया, अच्छा बताओ उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन बताओ, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। सो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट अनटिल और अनटिल आपके पास अ, ये सारे डेटा नहीं है, राइट। So that's about this models of the FortiGate firewall. But the more powerful firewall you're going to purchase, you need to pay more money, but you are going to get more features. You can see even you are start getting the local storage as well, 4 TB, 4 TB. You can start getting some kind of the 400 Gbps. You can see 8 interface, 100 GPS. So you're even getting the 400G cards. You're going to connect and you're going to exchange the traffic about that. सिमिलरली हमारे पास एक तो FortiGate फायरवॉल होता है, 3 कंपोनेंट होते हैं जो मैंने बताया था पहले। एक तो FortiGate फायरवॉल होता है जो हमारा बेसिकली एक फायरवॉल होती है, बस फायरवॉल का काम क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने बहुत लेमन तरीके से बताया था वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्लास ऑफ द FortiGate। विल कवर अगेन विद द वेरी like layman examples कि आप एक घर बनाते हो and once you know build your house, how things is going to protected। सो उस हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या लगाते हो, आप डोर लगाते हो, डोर पे आप लॉक लगाते हो, राइट। डोर लगाया, लॉक लगाया, फिर इस पे आप इससे भी प्रोटेक्शन नहीं होते तो आप डबल डोर लगा देते हो, मतलब डुअल डोर लगा देते हो, उस पे भी लॉक लगाते हो। कई बार इससे भी थेफ्ट हो जाता है, देन यू डिप्लॉय द सिक्योरिटी गार्ड, राइट। सिक्योरिटी गार्ड का भी अगर मान लेते हैं कि समहाउ थेफ्ट हो जाता है उसके रहते हो तो आप सीसीटीवी लगाते हो। बट ऐसा नहीं कि आप इतना कुछ खर्च करने के बाद भी आपका थेफ्ट घर में रुक जाएगा, नहीं, स्टिल देयर इज चांस कि सीसीटीवी लगा हुआ है और द पर्सन इज गोइंग टू बी अगेन कम इनसाइड, एंड होता है, दिस इज रियलिस्टिक। सीसीटीवी लगा होता है फिर भी लोग क्राइम करते हैं, बट देयर इज अ चांस सीसीटीवी अगर लगा हुआ है मेरे पास और सिक्योरिटी गार्ड भी मेरे पास है, तो देयर इज अ चांस कि आई कैन गेट द एविडेंस एंड आई कैन कैच द कल्प्रिट, और उसको मैं जेल भिजवा सकता हूँ, आई कैन रिकवर माई मनी। सो मैंने सिंपल दरवाजा लगा देता, मेरा हो सकता है कि मेरा काम हो सकता है कि 10,000 में मेरा हो जाता है, राइट। इट इज गोइंग टू जस्ट 10,000 टू गेट्स इज गोइंग टू बी डिप्लॉय। जस्ट मैं छोटा सा फिगर दे रहा हूँ, इट कुड बी द मोर, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर कितने का आता है गेट एक। सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे तो हो सकता है उसकी मंथली सैलरी अगेन 10,000 और होगी, एंड सीसीटीवी लगाऊंगा तो अगेन 10,000 और। तो द मोर सिक्योरिटी यू आर पुटिंग टू प्रोटेक्ट योर हाउस, यू हैव टू पे मोर मनी, यू सी।
सो जहां भी आप कंप्रोमाइज करोगे तो आपका मनी कंप्रोमाइज होगा, तो आपका सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज होगा। सिंपल सा फिलोसफी है, राइट? आपको ज्यादा पैसा देना है तो ज्यादा आपको फीचर मिलेंगे। सिमिलरली आपके ये सारे फीचर आपको लेने हैं, यू वांट टू गेट मोर स्पीड, यू वांट टू गेट okay, so guys, my voice is breaking in between. Can someone confirm? Is it? I got No, some no, 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 noise. sir, no. it's No, all no. good. All All good, good. all good. Yeah. Okay. So, Ritesh, probably you have to check from your side. Sorry for that. Maybe we have a network issue. Yeah, that could be. Thank you, everyone. So that's why we are talking about the FortiGate firewall. So FortiGate firewall is like a very awesome firewall, very lightweight firewall, and we having the very good features, variety of the flavor available in the market. Similarly, we having the Forti Manager. So why we need the Forti Manager? We'll do the deep dive with the Forti Manager at this stage, but just understand, just centralized management platform. So इसके भी बहुत सारे मॉडल होते हैं, मतलब कि जैसे Palo Alto में पैनोरामा होता है, राइट? पैनोरामा में क्या करते हो कि जैसे आपकी बहुत सारी फायरवॉल है, राइट? सो मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारी फायरवॉल फायरवॉल A B C D है। अब आपको कोई एक छोटा चेंज करना है। आपके मैनेजर ने बोला कि जस्ट डू वन चेंज, कि आपको इस पे SNMP की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है। अभी तो मैंने 4 बताया, लेकिन हो सकता है कि 400 ही फायरवॉल हो सकती हैं। तो SNMP की चेंज करना, और सब पे एक ही चेंज करना है कि उस पे SNMP का IP आपको चेंज करना है 2.2.2. जस्ट एग्जांपल, ठीक है? ये पब्लिक IP एड्रेस है, ये नहीं डालते हैं, बट इट कुड बी, राइट? तो आपके अगर 400 फायरवॉल है, सो आपको 400 फायरवॉल पर लॉग इन करके एंड यू जस्ट हैव टू मेक दिस चेंज। सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज मोनोटोनस जॉब। मैंने क्या किया कि एक डब्बा यहाँ लगा दिया, और इन डब्बे से मैं सबको कनेक्ट कर दिया, इन फायरवॉल को इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। जैसे आप लोग एसडीएन में पढ़ते हो, वी मैनेज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। इसी डब्बे को यहाँ पे पैलो अल्टो में बोलते हैं पैनोरामा, राइट? तो पैनोरामा इज अ डिवाइस जहां से हम बैठकर जितनी फायरवॉल है उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उनकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, वहां से कोई भी रिपोर्ट लॉग कुछ भी कर सकते हैं। So this panorama is just going to manage all the firewalls. Single pane of glass, central located in somewhere in my network, right? In data center. बस मुझे उस डिवाइस पर लॉग इन करना है, और एक बंदा लॉग इन करके it is going to deploy all the changes to all the network devices. This is how it is going to be happen. This is about the panorama. Similarly, the Forti Manager is the one of the tool in the FortiGate. Forti Manager, that is centralized management, कि panorama को replace करके ये सारी Palo Alto की फायरवॉल की जगह FortiGate की फायरवॉल है, सारी 400 जो भी फायरवॉल है, सेम काम को करना है, कुछ और अलग नहीं करना है। SNMP चेंज करना है, मतलब कि सिमिलर काइंड ऑफ चेंज यू वांट टू डिप्लॉय टू द ऑल फायरवॉल। सो आपको Forti Manager पे जाकर लॉग इन करना है, आपको Forti Manager पर लॉग इन करना है, दैट इज सेंट्रलाइज सिंगल पैन ऑफ ग्लास अगेन, और वहां पे कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, पुश करो, हो जाएगा। वहां से ट्रबल शूटिंग रिपोर्ट जो करना चाहो सारा कुछ हो जाएगा। सो दिस इज द फोर्टी मैनेजर। सो यू कैन सी कि आप यहाँ पे फोर्टी मैनेजर के आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हैं, मतलब मॉडल्स हैं। 200 है, 410 है, यहाँ पे 1000 है, 3000 है, 3700 है, एंड सम आर द लाइसेंस बेस्ड आल्सो वी हैव VM बेस्ड, राइट? सो यू कैन सी कि कितने इसमें VDOMs मैक्सिमम बना सकते हैं। VDOM like just splitting the firewall to the multiple firewall, right? So you can see more Forti manager we have powerful, more we can do that, right? सस्टेन लॉग रेट्स, इनके ये हैं रेट इनके, राइट? और टोटल इंटरफेसेस पे देखो, स्टोरेज कैपेसिटी देखो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? सो डिवाइसेस बेसिकली इसमें 30 मैनेज कर सकते हो, राइट? एंड वीडो मैक्सिमम 30 बना सकते हो। इस पे आप 150 कर सकते हो, इस पे आपको 1000 कर सकते हो, 4000। अगर कंपनी में आपका 700 आपके पास डिवाइस है जो आपको मैनेज करना, तो आपको यही परचेज करना पड़ेगा। आप ये करोगे तो नहीं कर पाओगे, राइट? सो आपको कितना लॉग स्टोरेज करना, अगर आपको इससे ज्यादा मतलब 8 into 32 GB से ज्यादा लॉग एक्सेस करना है, राइट? सो आपको ये लेना पड़ेगा फिर। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू जस्ट हैव टू परचेज द प्रोडक्ट, right? So centralized management. We'll do the again discussion on it, right? So moving next, we are having the 4D analyzer. So what is the 4D analyzer? So this is the central, again a tool, central tool. So just logging and reporting means आपको कोई log चाहिए, कोई report चाहिए, आप इस tool पे login करो, आप वहां सारा report fetch कर लो। तो इसमें भी अलग अलग कितने दिन तक log ये रख सकते हैं, राइट? यू कैन सी क्या लॉग है, सस्टेन रेट क्या है इनका, टोटल इंटरफेसेस क्या है, ये सारे। तो ये जस्ट इट इज जस्ट वन ऑफ द माई टूल वेयर आई कैन जस्ट गेट ऑल लॉगिंग एंड रिपोर्टिंग। इस तरह से एक हमारे पास सीम हमारे पास टूल होता है, FortiGate का ही एक हमारे पास टूल होता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली हमारे पास एक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। सो ये भी एक तरीके से लॉगिंग रिपोर्टिंग के लिए काम आता है, बट दिस इज मोर अबाउट द इवेंट
like what event is happening in my network, what kind of risk associated with those events. So if अगर आपको उसको एनालाइज करना तो आप 40 सेम को भी आप यूज कर सकते हो. सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑथेंटिकेटर, यूजर को ऑथेंटिकेट करना कैसे, 40 एपी जो वायरलेस के लिए यूज होता है, 40 स्विच जो अपने स्विच में कनेक्ट करते हो, तो बहुत सारे 40 नैक भी है, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल हमारे पास है, इसको भी 40 सैंडबॉक्स भी हमारे पास है, 40 क्लाइंट्स भी है, 40 मेल्स भी है, तो बहुत सारी चीजें, 40 वेब भी है. हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे, but we'll have to understand about that, 40 manager, 40 analyzer, and 40 gate firewalls. So we'll more focus about the 40 gate firewalls, and we understand about the other functionality of the 40 manager and the 40 analyzer and the 40 clients as well, right? I hope till now you guys are happy. Any question here? Anyone having any doubt who want to talk to me? नो हेलो। सर। Yes, Sasikant, please tell me. बताइए. सर मैं क्या है अभी ज्वाइन किया हूँ अपना, बस मेरा एम शॉप में हुआ है, तो यहाँ पे क्या हाँ 40 नेट चलता है फायरवॉल। हाँ. तो मैं चाह रहा हूँ जैसे कि मुझे कोई इशू आता है तो मैं आपसे कंफर्म करके ट्रबल शूट करके वो कर सकता हूँ। बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस लर्निंग यही हमारा है कि जब आप हमारे सेशन के थ्रू आउट द सेशन कंप्लीट करोगे, जो भी हमारा ऑलमोस्ट 2 महीने का सेशन होगा, सो यू हम्म। विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच कैसे कॉन्फ़िगरेशन होना है, कैसे ट्रबल शूटिंग करना है, कैसे चीजों को हम देखते हैं. दैट इज गोइंग टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मी. सो आपको एक एक स्टेप, एक एक सिनेरियो में समझाऊंगा, एंड देन यू कैन इजिली ट्रबल शूट. मतलब पढ़ाई करने का मतलब यही होता है कि हम सीखेंगे एंड विल जस्ट इंप्लीमेंट दोस थिंग इन माय प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, क्योंकि ये सारी चीजें जो लैब्स में क्रिएट करूंगा आपके सामने भी, जो लैब क्रिएट करने जा रहा हूँ, दैट इज हम्म। एक्चुअल थिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. सो वही सारी चीजें होने वाली हैं जो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ. बस यहाँ लैब होगा, वहां पे एक्चुअल प्रोडक्शन नेटवर्क होगा, बट बाकी कैसे एक्चुअली क्योंकि यहाँ पॉलिसी. पे वाईफाई के साथ 40 नेट वाईफाई यूज होता है यहाँ पे। हाँ. तो दैट्स वाई ना, ये 40 स्विच भी आपने देखा, 40 प्रोडक्ट भी आपने देखा, आपने बहुत सारी चीज देखा. तो हम्म। ये सारी चीजें आपका होता है. अजय, वीडो में जस्ट वर्चुअल डोमेन्स हमारे पास होते हैं, जैसे कि आपको एक ही फायरवॉल को, जैसे वीआरएफ होता है राइट, एक राउटर में हमारे पास मल्टीपल राउटिंग टेबल बनाना होता है, तो हम यूज करते हैं वीआरएफ. सो वैसे ही अगर एक फायरवॉल के अंदर आपको मल्टीपल फायरवॉल बनानी है तो वीडो में आप से स्प्लिट कर सकते हो, राइट. विल डिस्कस, वी हैविंग दिस टॉपिक इन आवर डिस्कशन, कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, विल डिस्कस अबाउट इट लेटर स्टेज. यस तरुण, यू आर आस्किंग समथिंग. Yes, yes. Actually, sir, actually, I wanted to know why Fortinet, what is the basic difference between Fortinet and Palo Alto, and why people are moving to Palo Alto these days more instead of Fortinet? That's indeed a good question, right? I appreciate that. So I didn't discuss today because it was already well discussed in the previous one of the demo session. But let me just brief you. That's a really good Mm, question, right? So we having a two source to understand this, answer, right? Two source, right? One is the Gartner Magic Report, Magic Quadrant Gartner Report, right? This is okay. the global Yeah, the organization, global right? organization which Yeah, give reports yeah. for Who's give the reward for all the products, right? technologies. Yeah, all the Yeah. technology, right? So in this technology report, you can see that uh, we having a three products in the market who are the leaders, right? As per the 2022 last year September survey, I have to update the slides based on the this year's survey. So in this survey, sometime you'll find Palo Alto on the top or 40 just behind the Palo Alto. Sometime you'll find 40 Net is on top and Palo Alto behind, and Checkpoint is like this. So these three products are, I can say, equally important. It's not like कि मुझे 48 आता है तो Palo Alto नहीं सीखना है, और मैंने Palo Alto सीख लिया तो मुझे 48 सीखने की जरूरत नहीं है, या चेक पॉइंट सीख लिया तो बाकी सीखने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं है. एक्चुअली क्या है कि ये तीनों ही वेंडर ने ना पूरे मार्केट कैप को कवर कर रखा है. सो लेट्स सपोज इफ वी हैविंग 100% मार्केट कैप, राइट, तो इसमें से 70 और 80% जो है ना, इनका मार्केट है. सो दे हैविंग द मार्केट इन 70 एंड 80%. मतलब उसमें से कुछ कस्टमर आपके पोलो ऑल्टो को मिलेंगे, कुछ आपको फोर्टीगेट का मिलेंगे, कुछ आपका चेक पॉइंट का मिलेंगे. बट मोर अगेन, यू इफ यू आर गोइंग टू सेग्रीगेट दिस परसेंटेज, ये 70% जस्ट टेकन ए फिगर, तो आपको हो सकता है कि फोर्टीगेट का आपको यहाँ पे 40% मिल जाए, या 35% मिल जाए, या पोलो ऑल्टो का आपको ज्यादा नंबर में लिख दिया, सॉरी. सो हो सकता है कि यहाँ पे आपको फोर्टीगेट का आपका 20% मिल जाए, यहाँ पे इसको पोलो ऑल्टो का 30% मिल जाए, और अगेन 20% या 15% आपका चेक पॉइंट का मिल जाए, या 25 ये मिल जाए. इस तरीके से हो सकता है फिगर, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि पोलो ऑल्टो का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है.
ease to implement. FortiGate भी सेम, ये सारा का डीएनए सेम है, इनके फाउंडर जो है ना ऑलमोस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं तरीके से. सो दे आर वेरी क्लोजली वर्क टुगेदर, एंड आपस में अलग होकर इन्होंने 3 कंपनी खोल दी, राइट. सो कहीं ना कहीं इनका डीएनए मैच होता है, और कोई भी आप प्रोडक्ट सीख लेते हो तो दूसरा सीखना आपके लिए बहुत ईजी होता है. So, long story short, right? If you are going with either of the vendor, like the Fortinet or Palo Alto, more specific, checkpoint का थोड़ा सा मार्केट कैप कम है, तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में. जो मेरा सर्वे है, मेरे हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये दोनों सीख लेते हो तो यू आर द सुपरमैन फॉर द फायरवॉल इन द मार्केट. आपको कहीं जॉब की टेंशन नहीं है, राइट. आपको कहीं भी जॉब की टेंशन नहीं है. सो आई कैन से यस. Based on the Gartner report, these are the leaders, and Fortinet and Palo Alto always going to lead the market. So if they are covering the more market, so we having the more engineers requirement. And if you know about the product and the solution, आपकी हमेशा जॉब रहेगी रहेगी. दूसरा हमारे पास सोर्स है eSecurityPlanet.com. इसमें आप अगर पोलो अल्टो को और फोर्टिनेट को कंपेयर करोगे, देखो मोस्ट ऑफ द केस में आपका पोलो अल्टो और ये फोर्टिनेट सेम है. यहाँ भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम, यहाँ भी देखो थोड़ा सा ठीक है, बट कुछ एक सेक्शन में वैल्यू फॉर मनी थोड़ा सा पोलो अल्टो गुड है, लेकिन ये आपका ज्यादा सस्ता पड़ता है, तो ज्यादा बेटर ही है, ठीक है. तो पैसा जहां आता है ना, तो लोग थोड़ा प्रोडक्ट जहां पे थोड़ा कम भी रहता है ना, तो लोग सोचते हैं यार चलो थोड़ा पैसा तो बच रहा है मेरा, तो वो लोग चले जाते हैं FortiGate के पास. बट पोलो अल्टो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, बहुत ही अच्छी फायरवॉल है, बहुत रिलायबल फायरवॉल है, बहुत अच्छे फीचर हैं. FortiGate भी उससे कम नहीं है. बोथ आर 100% इक्वल, आई कैन से. अगर मेरे से न्यूट्रली पूछो तो ऐसा कुछ नहीं है. बट यही है कि हाँ, थोड़ा सा FortiGate सस्ता पड़ता है, तो मार्केट में इसको ज्यादा थोड़ा लोग लगा लेते हैं. बट पोलो अल्टो को भी अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है. तरुण, आई होप यू नो नो, अंडरस्टैंड लिटिल बिट. या ना, मैं आई नो दीज थिंग्स, आई नो. गार्टनर रिपोर्ट वगैरह मैंने देखी थी. मैं समझना चाह रहा था कि इनका डिफरेंस क्या है बेसिकली दोनों में. मतलब एज ए, मतलब टर्मिनोलॉजी या टेक्नोलॉजी तो सेम ही है. तो इनका मतलब जैसे कोई कह लो कि कुछ बैकएंड में जैसे हम करते हैं, जब हम डिप्लॉय करते हैं वर्चुअली वीएम बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो उन उस केस में क्या डिफरेंसेस हैं इनके. देखो आप डिफरेंसेस अगर आप, टोपोलॉजी या कुछ ऐसा कह लो, नहीं नहीं वैसा नहीं, अलग. हाँ. टोपोलॉजी में कुछ डिफरेंस नहीं है, राइट. देखो अब होता क्या हम्म. है कि देखो फोर्टिनेट हमारे पास 3 फायरवॉल को मैंने यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस किया है, जस्ट फॉर द प्रीवियस नॉलेज, राइट. सो हम्म. आपको बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगे FortiGate पोलो अल्टो में. अलग अलग नाम से मिलेगा, यहाँ पे कुछ फीचर होगा उसका अलग नाम यहाँ होगा, राइट. हम्म. तो आपको, अगर आप पूछते हो कि क्या पोलो अल्टो में एडवांस थ्रेट इंटेलिजेंस फीचर अवेलेबल है विद द वाइल्ड फायर, तो आपको वही चीज आपको FortiGuard थ्रेट इंटेलिजेंस के नाम से मिल जाएगा FortiGate के अंदर. एप्लीकेशन विजिबिलिटी इसके अंदर है, तो यस, इसके इंट्रूजन प्रिवेंशन इसके अंदर है, ये भी है. इसके अंदर पनोरमा, इसके Forti मैनेजर है, देखो. तो ऑलमोस्ट यू विल गोइंग टू फाइंड कि सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है. इसके अगर क्लाउड सोल्यूशन की बात करो तो प्रिज्मा एक्सेस इसके पास है, FortiCAS भी इसके पास है, देखो. बस ये नेमिंग भी, कन्वेंशन अलग है हाँ, बस. नेम कन्वेंशन अलग है. जैसे आपके पास 2 कार हैं, जैसे ऐसे समझो कि आपने एक कार खरीदने गए, एक आपके पास हुंडई की कार है, एक आपके पास आपने टाटा की कार खरीदने गए. और कार के अंदर 4 टायर तो होंगे, 4 दरवाजे भी होंगे, राइट. एक शीशा भी होगा और 2 वाइपर भी होंगे, राइट. बस क्या हो सकता है कि आपने थोड़ा ज्यादा पैसे दिए तो आपकी एसेसरीज इनसाइड का थोड़ा चेंज हो जाए, इंटीरियर चेंज थोड़ा मिले आपको, यही हो सकता है ना. थोड़ा लुक एंड हाँ, फील भी थोड़ा चेंज मिले. बाकी कार वो भी रोड पे चलेगी, वो भी 100 की स्पीड चलेगी और ये भी चलेगी, राइट. बट बस आपको अच्छा म्यूजिक का, ब्रांड हाँ, बस अलग है. ब्रांड अलग हो गया. दैट इज द सेम थिंग. हम्म. सो सेम इज द हेयर. पोलो अल्टो फोर्टिनेट इज लाइक द चेक पॉइंट. आपको बहुत सारे फीचर आपको एग्जैक्टली सेम मिलेंगे विद डिफरेंट नेम, बस दैट्स ऑल, राइट. So I believe we are good. So let's start the second part, and we'll have the any other question. Manish, you want to ask anything? Sir, I have one question. Actually, I know well Palo Alto checkpoints and Paranoma. Mm-hmm. So, you verify here for ये जो पालो अल्टो, अगर जो मान लीजिए बहुत अच्छी तरह हम लोग जानते हैं, तो Mm. ये सीखना हम लोग के लिए बेनिफिट रहेगा. Definitely, if you know the Palo Alto, it is going to very easy for you. You'll find a lot of differences in terms of terminologies. Because I'm working on it Accenture in Pune company, in Mm-hmm. Pune location. Mm-hmm. So that's why what is the more advantage for me?
definitely if you already know the Palo Alto का आपको अच्छी knowledge है, and the moment you learn the FortiGate and आपको सारे deployment, आपके component concept, सारे concept clear हो जाते हैं FortiGate के बारे में, and the moment you are going to write this Palo Alto and the FortiGate in your CV, you're having the more opportunity for the market for the new jobs, or might be internally you're going to promote if you're having the requirement in the different project having the FortiGate firewall requirement to the Palo Alto, तो वहां पे आपका कुछ एडवांटेज मिलेगा जरूर। तो मैंने जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो जिनको अगर अच्छी क्लाउड प्रॉक्सी की नॉलेज है, the people having the good knowledge about the Palo Alto and the FortiGate, they are like the cream in the market. They are the unique in the market. They are withdrawing very good salary in the market with the 5, 6, 10 year of experience. Even if we can't think about it कि how much उनको सैलरी मिल रही है, कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा कि they are just having 7 lakh and they reach out to 25 or 21 or like the 19 18 kind of the salary within the one year of this learning this all stuff. So ये सारी चीज आजकल मार्केट में चल रही हैं। सो मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं क्योंकि आई एम एसोसिएटेड वेरी लॉन्ग टाइम विद दिस ट्रेनिंग डोमेन। सो लोग बताते हैं कि सर मेरे पास अभी इतना ऑफर था एंड आई गॉट आफ्टर दिस ट्रेनिंग दिस ऑल। सो बहुत एज मिलेगा ट्रस्ट में अगर आप सीखते हो तो। इट्स नॉट लाइक कि आपको अगर ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस यू फील लाइक आई कैन जस्ट गो एंड लर्न बाय सेल्फ लर्निंग बाय डूइंग द लैब्स, यू कैन डू दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम, you can do that. It's very easy to understand, but you have to put your effort, your own effort. If you're having a time, you're having the passion, you can learn by your own. But you think, no, I just need someone help, I need some mentorship, I need someone guidance. So we are here to help you. That's all. It's both way. Manish, okay? Yeah, fine. All right. So let's move the second part that is interesting. How to configure the very new firewall, right? How we are going to configure the very new firewall. Let's suppose you're having the very new firewall, right? And someone asks you to configure those firewall and take the CLI and GUI access. How basically you are going to do that, the configuration, day zero configuration. So first let me add the firewalls here. So this is my Fortinet firewall. So I'll use the image that 7.0.9. We'll use this. We have to license this firewall. So we'll use later stage. So I'm just using this one, which not required right now license. And let me change some kind of the fancy. So this is my firewall. So this is how it is going to happen. And I can just do it, right? So this is my FortiGate firewall. So first thing, आपको जब कंसोल लेना है किसी भी तरीके से firewall से बात करनी है, तो आप कैसे बात करोगे? We required one of the PC, one of the computer. So what computer could be? So मेरे पास एक कंप्यूटर है, मैं विंडोज सर्वर का कंप्यूटर यूज कर लेता हूँ, right? So let me just use as a PC. So मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, later I'll show the PC as well. So this is my PC. ये मेरे को PC चाहिए, ठीक है? So मैंने एक PC ले लिया, राइट? और ये PC लेने के बाद मैंने इसे कनेक्ट किया। अब मुझे कंसोल लेना है, राइट? तो मैंने बताया कि जब FortiGate फायरवॉल जाओगे तो इसके बहुत सारे पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं किस पोर्ट पे बेसिकली अपने पीसी को कनेक्ट करूंगा कंसोल लेने के लिए? तो यहाँ पे तो कुछ कुछ डेडिकेटेड कंसोल पोर्ट भी होते हैं, बट मान के चलो कंसोल पोर्ट नहीं है आपके पास, स्टिल यू वांट टू टॉक टू द फायरवॉल। सो कैसे करोगे? तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से केबल उठाओ, ठीक है? अपने पीसी से लैन केबल उठाओ और फायरवॉल पे जाने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको पोर्ट 1 पे इसको कनेक्ट करना है। पोर्ट 1 पे बाय डिफॉल्ट इसको कनेक्ट करना है। लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, पोर्ट 1 पे आपका वैन भी चलता है, मैनेजमेंट भी चलता है, सब कुछ चलता है। आप दूसरा पोर्ट भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट पोर्ट 1 पे यूज करोगे। तो इस पे ये जो इंटरफेस होता है, इट इज गोइंग टू इनेबल विद द डीएससीपी फंक्शनलिटी। सो इट विल ट्राई टू गेट आईपी एड्रेस बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली, you don't have to assign the IP address, but this PC doesn't having the capability to assign the IP address, so it will not get the IP address from this PC. But let's suppose I have this ISP, and this ISP having a DHCP server, I am connecting this firewall with the port 1, and this is acting as a DHCP server, and this is DHCP client. So this is automatically going to get the IP address from the DHCP server. Okay, so we'll discuss this scenario also, how it is going to happen. But first understand, let's say suppose you connect on this port where the DHCP is enabled, then how you are going to get the access from this PC by changing the DHCP to a static IP assignment process. So this is the first lab we are going to do that. So we'll understand how the IP is going to be assigned, how the step-by-step configuration is going to happen for this particular firewall. So let me just do that. Okay, so I'll just save it.
After saving, I'll just have to assign some kind of IP address from the same range. So I'll just put here 192.168 dot. Let's suppose I'll put 10/24. Okay. So this is my one IP address, which I'm going to assign it here on this interface. This my intent. I want to just assign this IP address. And for this PC also, I'll just assign the IP address. Let's suppose .11. Okay. So let me start this PC. So I'll start this PC from here and I'll start this firewall as well. So this is like the baby step we are taking to just take the firewall configuration, and then we'll do the step-by-step configuration. So once this is done, I'll just open this one. Okay. And you can see this, my PC is getting started. I'll open the firewall as well. And if you want to maximize it, you want to open in the browser, you just click on the maximize. It is just going to open in the browser. Okay. See, these two devices are getting connected. So let them connect. We just have a little bit wait for here. So let me see. So now you can see your Fortinet is ready to log in. Your Fortinet is ready to log in. Your PC is still booting. Your server is still booting. So once you try to log in very first time Fortinet, so what is your username? So your username is admin. So let me write here. You guys make it note, right? So default username. Let me just write here. Default username is admin. So you just have to type here admin, right? So let me just type admin. Now it is asking the password. So password is blank. You don't have to type anything in this password section. Okay. You don't have to type anything in this password section. You just press enter. So let me write here. Password should be the blank, no password. Password blank means no password required. Okay. Just press enter. Many people always confused about it. Okay. So let me just press enter here. Okay. So I press it. Now it is asking to set the new password. So I'll set my own password. So I'll set here again admin and I'll confirm this is my password. So now my password has been set to this firewall and you can see you are in the enable kind of the mode, right? So we are good till here. All right. So you understand how to set the password. Now going on the Win server and means the PC, we just have to assign this IP address. So if you go here and if I just want to check what is the IP address for this particular machine, so probably we don't have any IP address. We just have to assign the IP address. So let me just go there. So here I can go and IP config. See, there is a APIPA IP address. So I need to assign the IP address for this particular machine as per the topology. So how can I assign? I go in the network section. Let me just close this one, server manager. I'll go in the network section. Oh my God. Let me close this one as well. Okay. So I'll go in the network properties, right? And I'll go in the change adapter settings. I'll go in the Ethernet and after this Ethernet, I'll click the TCP IP version 4, use, and here I'll just go and 192.168.10.11. And there is subnet mask. I'm not going to give any gateway because these two devices going to stay in the same broadcast domain. So no gateway is going to be required. Okay. So I'm leaving the gateway as a blank, but later stays it is going to be required. I'll let you know in which scenario this gateway is going to be required. Okay. So I'm just going to close this and then I'll verify the IP address for this particular machine. So you see this machine having this IP address and we connected with the LAN cable. But what about the other end IP address of this particular FortiGate firewall? We don't assign any IP address. Then how IP address is going to assign on this particular firewall? So this is second task. We have to assign the IP address on this particular firewall. So the step to assign the IP address, we just have to check whether we having the IP address on this particular interface. Which interface? That is a port 1. So how can we check that first? So we having the option show system interface and just put the question mark and see here.
These are the ports. We having some kind of the like the L2 NAT and the port 1, 2, 3, and 4, right? You can see. And I told 2, 3, 4 ports are the static IP like assignment method is there, but here it's trying to DHCP. So even you're trying to assign the IP address on this port, it is never going to take the IP address on this port because it always try to get the IP address from the DHCP. So you first have to change the assignment method to just assign the manual IP address. We'll do the second lab, how it can be get the IP address from the DHCP. But first we have to understand how I can change the DHCP assignment method from this port. So how can I do that? So there is a way I can do that. So we just have to go in the configuration. So I'll go in the config, right? Config system interface. This command you just have to write, and you just have to add it port 1. Whatever port you want to edit it. Okay, and press enter. And you just have to set mode. Which mode you want to set? It's static or DHCP. So it's already DHCP. I want to set as a static. So I'll just put a static and enter and just and. Now you change so this command, so system interface, again run this command and see now this port is become the static assignment. So now I'm able to assign the IP address on this port, and after assigning the IP address, probably my PC can talk from this to this. Right now, if I'm going to ping from this PC, never going to work for me. It is never going to work. Let me show you because we not assigned any IP address. So let me just ping here 192.168.10.10 minus T. It's not pinging because this IP is not live. It's still not configured, right? So not 1.10. Sorry, let me correct it. Oh, we just have to make 10.0. Okay, because we put 10.11, so we just have to let me correct here. Okay, so to avoid the confusion, so we just have to use this subnet because we already assigned the IP address. So 10.10. Okay, so 10.10 is not pinging right now. So how can I assign the IP address? So I'll go in this FortiGate firewall. After going the FortiGate firewall again, sorry, I'll have to go in the config system interface, right? And this time I'll set sorry, edit port. First I have to go edit port 1 and set IP 192.168.10.10/24. You can put this way or you can put the subnet mask as well. So the moment you will do that, your configuration is done. But most important, you have to also think about that. See, this is the current port configuration. You can see this is the current port configuration. We are assigning the IP address and we change the assignment method as static. But there is one more field you are seeing, like when the Palo Alto we having the management interface configuration. जैसे Manish original ने Palo Alto पे काम किया, they know that. Similarly, every interface having the management profile call here also, that known as the allowances. So कौन-कौन से फीचर इस पे आप अलाउ है अभी? पिंग अलाउ है, HTTPS अलाउ है, SSH अलाउ है, HTTP अलाउ है, ये सारे आपको अलाउ है. टेलनेट इस पे अलाउ नहीं है. टेलनेट करोगे तो टेलनेट फायरवॉल नहीं होगी. So let me show that. इसमें कमिट भी करने की जरूरत नहीं होती है. तो मैं यहाँ गया शो सिस्टम इंटरफेस पोर्ट 1. अब देखो इस पोर्ट पे क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई. देखो यहाँ पे दिस पोर्ट हैविंग दिस कॉन्फ़िगरेशन, आईपी आपको मिल गया और इस पे आपका ये सर्विसेज बाय डिफॉल्ट अलाउ है. अगर किसी पे से कुछ हटाना है तो हटा सकते हैं. वो कैसे हटेगा मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को स्टेप बाय स्टेप. बट अभी इसके बारे में हम स्पेशल बातें करेंगे. बट राइट नाउ आई असाइन द आईपी एड्रेस. द मोमेंट आई असाइन द आईपी एड्रेस, देखो यहाँ से मेरा पिंग होने लगा. See, my PC start pinging to this FortiGate firewall because they are belong to the same domain. So ये मेरा CLI access तो आ गया. अब मैं इस PC से बैठकर अगर मैं यहाँ पे अगर मैं पट्टी सेशन खोलता हूँ तो फायरवॉल का CLI एक्सेस लेना चाहूँ तो SSH करूंगा तो मिल जाएगा मुझे, क्योंकि अभी तो मैंने कंसोल ले रखा है. So if I want to do the SSH from this PC, I'll take it. देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एडमिन यूजर नेम डाला एंड एडमिन पासवर्ड डाला तो मुझे यहाँ पे CLI एक्सेस मिल गया फायरवॉल का. देखो यहाँ पे सब कुछ, वो पहले कंसोल था, अब जैसे ही मुझे इस पीसी से कनेक्टिविटी होगी कंसोल से तो यहाँ पे मुझे सब कुछ मिलने लगा. सेकेंड पार्ट, हाउ कैन आई टेक द GUI ऑफ दिस फायरवॉल. CLI तो मुझे मिल गया, तो GUI कैसे लेंगे आप, GUI कनेक्शन कैसे लोगे. तो GUI कनेक्शन लेने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके फायरवॉल के इंटरफेस पे
your firewall interface must be enabled with the HTTPS or HTTP. अगर ये फीचर इनेबल नहीं है, you cannot take the firewall GUI access. क्योंकि आप जब ब्राउजर पे जाते हो, जैसे अपने पीसी पे गए, पीसी का आपने ब्राउजर खोला, तो ब्राउजर पे जीयूआई तो ब्राउजर पे आता है, ब्राउजर पे जाने के बाद यू जस्ट ऑलवेज डू द एचटीटीपी और एचटीटीपीएस. दिस इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे. So I have to go there and I have to write here HTTP. I'm just going to do HTTP because HTTPS is not supporting, the license is not there. So I'm just going to put the IP address 192.168.10.10. So this is the HTTP. So this service is going to land to this my firewall interface. And if this firewall interface, this service is not allowed in the allowing list, means allowance list, this is not going to talk to the firewall. This PC never ever going to talk to the firewall. But let me just try right now. So if I'm trying right now, see, I'm able to open the web UI port and it is asking the username and password. So till here, if I go and put the username and password, this firewall is going to show me the very nice dashboard after doing some basic configuration. See, so it is asking for the initial setup. Once you do the GUI, it is just going to ask the initial setup, how you can go the configure the, you can just want to do right now or later. So you want to do that because we just want to configure. So it is asking what host name you want to configure. So I just want to configure FortiGate firewall, right? Demo, whatever you just want to put a name, you can just put it. Then just click OK, nothing is required, anything else. So we are good with the firewall. See, so right now I'm in the FortiGate firewall. And if you just see here, Hello, sir. dashboard, yes. I have one question that in some of the firewalls like SOPOs and checkpoints, once we open in a particular IP, so that requires some port numbers like 444, 4 times 4 for the SOPOs. So here is in the SOPOs firewall, there is no port number by default. This is the port number by default, na? This is HTTPS No, having I'm the not port. talking about this. I'm talking that once we put that HTTPS // particular IP address /, then port number. No, that is not going to require. No port is required. That's Okay. that is So default we port need to 80 and configure it 443. if you No, require that is also not required. No required. No port number is specifically required. The Palo Alto and this Fortinet. this Fortinet not required. Just go do the HTTP and HTTPS. No Okay. special So port is there number. any option inside the firewall that we can give the certain port number for our organizations? For management, I don't think, because by management interface by default, these are the feature. Let me see if we can have the custom. Let me just show you, okay? Yeah, please. Or let me show you the GUI as well, so you can understand from the GUI. It's very easy. So if you go the network, right, and interfaces, if you go there, so let's suppose this is the interface, right? So these services are by default ping and some say ping HTTP, HTTPS allowed right now, port 0, port 1, right? And you want to edit this all. So see, this is the only, oh, sorry, what happened? Okay, this is the only port numbers we have, no other port. We can just allow Okay. this There address. is no custom option here to. No custom option. You can see this is the Okay, only got option. it. Yeah. Same case we having in the Palo Alto as well. Yeah. Because we So are using Sophos firewall here, and that default having 4 times 4 port number to open a newly configured firewall. okay. Right. Okay, might be. So I'm not very familiar with the suppose. Okay, we having done another trainer for the suppose. So I need to check with him. So this is how it is going to happen. So now you're having the FortiGate firewall dashboard, right? And this is how you can get the IP address. Okay. So I believe that is okay with everyone. How this console is going to be taken, how this configuration is going to be happen for the initial day for day 0 configuration. Any question here? Anyone have? Hello, Ramesh here. Yes, Ramesh. Suppose प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डेडिकेटेड मैनेजमेंट इंटरफेस रहता है फायरवॉल को, तो हम जो तो कंसोल का एक्सेस लेके हम मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी देना पड़ेगा ना? कैसे करेंगे मतलब? किस केस में बात कर रहे हो आप? फोर्टिनेट केस में, सपोज केस में? फोर्टिनेट में Fortinet is not having dedicated management interfaces. There is no concept is a management interface. Like the Palo Alto, we having dedicated management interface. FortiGate doesn't have this kind of the feature. You can use any of the interface as a management interface.
मतलब हर टाइम मतलब पोर्ट 1 को ही कनेक्ट करना पड़ेगा कंसोल, राइट? Yes, you can do that, but there is another high model firewall also. VM में तो हमारे पास यही ऑप्शन है, but high model firewall is coming with the console ports as well. वहां पे कंसोल कनेक्ट कर सकते हो अगर ओके, आप मतलब फिजिकली। हाँ पोर्ट 1 को कनेक्ट करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट हाँ, कंसोल। डायरेक्ट कंसोल भी यूज कर सकते हो, बट इफ देयर इज नो कंसोल एंड यू आर वर्किंग द वर्चुअल एनवायरनमेंट, सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पोर्ट फॉर दिस कंसोल कनेक्शन। हेलो हेलो। यस रितेश, यस बताइए। सर, एक क्वेश्चन था हाँ कि हाँ जैसे कि आपने बताया कि पोर्ट 1 पे डीएचसीपी अनेबल रहता है, तो हम पोर्ट 1 पे अगर अपना सिस्टम का पोर्ट लगाते हैं तो सिस्टम को अपने आप ऑटोमेटिकली फायरवॉल से डीएचसीपी मिल जाएगा, ऐसा है? हाँ, मैं दिखाता हूँ अभी। देखो, अब जैसे अगर मान के चलो कि जस्ट थिंक अबाउट दिस इज अनदर फायरवॉल, राइट? मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे ये भी सिनेरियो देख लो आप लोग। दिस इज द फायरवॉल, राइट? एंड जस्ट क्योंकि हम लोगों ने अभी तो जो हाँ, कॉन्फ़िगरेशन किया उसमें तो हमने मैन्युअली डाला ना। मैंने डाला, मैं भी दिखा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली दिखा रहा हूँ। दैट इज द सेकंड स्टेप, सो लेट मी डू दैट। ओके, मैं भी करके दिखाता हूँ आप लोग को, 2 मिनट लगेगा बस। सो दिस इज माई another firewall. For this firewall, I'm just going to connect with the DSCP network. So I'm just going to connect with this. I'm just going to on management cloud, uh, and I'm just going to connect this firewall with the this. Okay, port 1. Once I have done, I have to restart this firewall. So मैंने इसको start किया, तो इसको start होने दो आप लोग। सर, ये जो आपने बता रहे हो ये नेट के साथ कनेक्ट हो तब मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जब कि न्यू हाँ फायरवॉल हम लेते हैं और हाँ, फायरवॉल के साथ हम कंसोल नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट लैन केबल लगाते हैं तो हमें कौन सा आईपी मिलेगा सिस्टम पे? नहीं तो मिलेगा उसको आईपी एड्रेस। देयर इज नो आईपी एड्रेस। जैसे ये आपने लगाया ना अभी, इसमें आईपी नहीं मिलेगा। कैसे? आपको पीसी कैपेबल नहीं है डीएससीपी आईपी ऑफर करने के लिए, या तो फिर आपको उसको ऐसे डिवाइस होने चाहिए दैट इज गोइंग टू कैपेबल टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस। या तो मैनेजमेंट आईपी डीएससीपी। आता है ना सर, उसमें लिखा आता है, जैसे कोई नया डिवाइस आएगा तो हाँ, जैसे कि लिखा हाँ, होता है that उसमें that पीछे। that that is a 99 IP address. Yes, yes. I'm coming to that हाँ point. Yes, yes, yes. That's I got your मुझे question, right? सर, हाँ जैसे हाँ। सोफोस है, सोफोस के अंदर 172.16.16 वाला जो आईपी आता है, अरे, ऐसा कोई डिफॉल्ट आईपी मैं हाँ इसका नहीं मैं आता? समझ गया। जैसे पॉलो अल्टो में आती है, इसमें एक 99 की आईपी एड्रेस आती है, 19168। लेट मी हाँ 192 वाली सीरीज आती है सर, मैं 192 जस्ट बता रहा हूँ। हाँ, 168। यस यस, आई गॉट इट। मतलब डिफॉल्ट डीएचसीपी कॉन्फ़िगर आता है ना फोर्टिनेट के अंदर भी, लाइक अदर हाँ फायरवॉल। डिफॉल्ट आता है, उस पे लिखा रहता है, डब्बा जो आता है ये उसमें आईपी पैक आएगा, उस एड्रेस, पे या मिल। वन नाइन हाँ ये आईपी 99.1.99 आईपी आती है। ये दैट इज कौन से डिफॉल्ट पोर्ट आईपी पे रहता एड्रेस, है सो यू सर जस्ट ये? हैव टू गो। ओके जस्ट ओके, यू हैव मतलब टू जस्ट यू ये हाँ सीरीज के बस अंदर आईपी हम पीसी में डाल देंगे तो वो तो हो जाएगा, ठीक है। बस बस बस, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। आई वाज राइट। अबाउट टू इसके थ्रू कवर दिस आप वन। एक्सेस मिल जाएगा इसमें, आप इस हाँ, आईपी के थ्रू आपको फोर्टिनेट में एक्सेस मिल जाएगा, उसके बाद आप जो भी चेंजेस करना चाहे वो कर डेफिनेटली सकते हो। डेफिनेटली लेकिन डेफिनेटली सर, आप। इसमें भी सर मुझे क्वेश्चन ये है कि अभी पोर्ट 1 के अंदर हम लगाते हैं तो इसके अंदर पोर्ट 1 के अंदर तो डीएचसीपी अनेबल है, तो पहले तो हमें डीएचसीपी उसको डिसेबल करना पड़ेगा ना। देखो, एक्चुअली क्या होता है कि इस पे डेडिकेट पोर्ट भी आते हैं। जैसे मान के चलो कि हमारे पोर्ट पे डीएससीपी इनेबल है, राइट? सो अगर हम्म आप डीएससीपी इनेबल है तो उस पे तो आईपी मिलेगा नहीं आपको, तो उस पर डिसेबल करोगे, देन इट इज आईपी इज गोइंग टू बी हार्ड कोडेड कम इन पिक्चर। ओके, हम्म। सो देन इट इज गोइंग टू बी आपके पीसी पे अगर सेम सीरीज का आप सबनेट आईपी डालोगे तो वो आप कम्युनिकेट करेगा। तो वही स्टेप एक सिनारियो में हमने बात किया कि अगर मान के चलो कि हमारे फायरवॉल पे डीएससीपी इनेबल है और उसके से मैनेजमेंट आईपी नहीं कॉन्फ़िगर, हार्ड कोडेड नहीं है हमारे केस में, राइट? सो उस केस में तो आपको मैनुअल असाइन करना ही पड़ेगा। बट द बॉक्स कमिंग विद दिस हार्ड कोडेड आईपी एड्रेस, सो उस केस में आपको फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट आईपी एड्रेस मैनेजमेंट इंटरफेस इज दिस। सो मैनेजमेंट इंटरफेस अगर आपके पास है और उस पे डिफॉल्ट आईपी पड़ा हुआ है, देन यू जस्ट हैव टू कनेक्ट योर फायरवॉल ऑन दिस मैनेजमेंट इंटरफेस, जो अभी बहुत सारे फायरवॉल पे आने लगी है, जो वीएम पे नहीं है अभी, राइट? सो आपको वहां से एक्सेस मिल जाएगा, फिजिकल फायरवॉल पे आपको दिख जाएगा। मैं अब दिखाता हूँ, रुक जाओ कैसे दिखेगा ये। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम हाँ पोर्ट नंबर 1 जो है उस पे डीएचसीपी बाय डिफॉल्ट अनेबल रहता है फोर्टीनेट में, तो हाँ हाँ। हमें ये डिफॉल्ट जो आईपी दिया हुआ है तो डिफॉल्ट आईपी तो उसमें लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि हमने पोर्ट 1 पे कॉन्फ़िगरेशन किया है, वहाँ पे डीएचसीपी अनेबल है। अगर स्टैटिक अनेबल होता तो वो लगता, मतलब हमें पोर्ट 1 की जगह पोर्ट 2 यूज करना पड़े, राइट? इस पे हमारे पास मैनेजमेंट इंटरफेस का कॉन्सेप्ट है, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। मैनेजमेंट पोर्ट, ठीक है? तो ये हमारे पास इस पे एक इमेज में भी दिख जाएगा। अब हार्डवेयर होती तो मैं दिखाता आपको,
बट रुको, मतलब मैनेजमेंट का पोर्ट अलग से आता है क्या इसमें? हाँ अच्छा ओके ठीक है, तो हाँ ठीक है सर, तो समझ में आ गया हाँ, मुझे। देखो इस पे दिखा रहा है यूएसबी का पोर्ट दिखा रहा है कंसोल का, ये कंसोल RJ45 का जो पोर्ट है ना, ये कंसोल वाला, कंसोल कनेक्शन 40 का। एफ में है सर, वो 40 एफ 60 एफ में है पीछे, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ है अभी मेरे सामने ही है, कंसोल का भी अच्छा आता है उसमें। अच्छा, आता है कौन सा में, कौन सा मॉडल बता रहे हो आप? इस पे देख डेटा शीट देख लेते हैं एक बार, 40F में। हाँ 40 एफ में देख लो, कंसोल का आएगा उसमें मैं भी देख रहा यहीं हूँ, रुक पे। जाओ। और सारे मॉडल 210 मैनेजमेंट, मैंने भी है शायद। मैनेजमेंट अगर पोर्ट आता है तो फिर ये आईपी डाल से हो, मतलब आईपी हाँ हाँ, ये अपने आप करने वो से हो जाएगा। हाँ जब आप मैनेजमेंट का पोर्ट आएगा, उसमें मैनेजमेंट का पोर्ट मिलेगा आपको, उसके थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हो, उस पे आईपी यस यस ऑलरेडी यस लिखा भी आता ऑल है। ऑलरेडी यस लिखा यस आता है मैनेजर पोर्ट पे। तो हम्म। वर्चुअल में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जैसे हम यस लैब सर। करेंगे तो वर्चुअल में नहीं मिलेगा, वर्चुअल में आपको कन्फिगर करना पड़ेगा। ओके दैट ओके। इज या, सो इसमें देखो डेटा शीट में नहीं लिखा है। ये 40F बता रहे थे ना, 40F पे तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसके बारे में लिखा ही नहीं है मैनेजमेंट पोर्ट के बारे में, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट रिटन हियर। बट यस, हमारे पास होता है। देखो यहाँ पे साफ साफ अगर यहाँ पे पढ़ते हो ना, आर्टिकल पढ़ोगे ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे यू विल फाइंड दैट कि फॉर एग्जांपल द डिफॉल्ट आईपी एड्रेस फॉर द मैनेजमेंट इंटरफेस, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट, यू कैन सी। सो यहाँ पे हम आकर ये आईपी एड्रेस होती है। ओके, एक क्वेश्चन ऐसा आता है सर इसमें कि इफ द हाँ सम ऑफ द फायरवॉल डजंट हैव मैनेजमेंट इंटरफेस एज अर्लियर यू टोल्ड अस, so in हाँ that case there is a number of port like 8 or 16. Okay, so हाँ, all ports having the DHCP facility, if I going to connect the my system नो to नो नो the नो नो, ओनली वन full, पोर्ट, ओनली वन okay, पोर्ट, only ओनली one port. Okay, got it. ओनली, लेट मी शो यू, सी दिस टाइम इट विल गेट द ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस, सी। सो सिस्टम इंटरफेस, एंड देखो इसको अपने आप आईपी एड्रेस मिल गया, देखो Okay, by इस the पे, बाकी सब DHCP. नहीं है। अब मैं इस पे ब्राउजर पे जाके इसको लॉग इन करूंगा ना, 168, सो दिस फायरवॉल इज गोइंग टू लॉग इन फ्रॉम माय पीसी, बिकॉज मैं इसी नेटवर्क पे हूँ अभी। So we are तो सर सर तो ये तो सर इसमें भी ऐसा भी कर सकते हैं ना कि हमारे सिस्टम में मतलब हमारे एनवायरनमेंट में अगर डीएचसीपी सर्वर अनेबल है, उसका केबल में अगर उस पोर्ट चले, में लगाता हो तो फिर मुझे उसका एक्सेस तो मिल ही जाएगा ना, मेरे डीएचसीपी से वो आईपी तो मिल मिलने जाएगा। में वही 9:30 बोलेंगे नीचे। यस हेलो। यस, हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा उस केस में तो ओके। आपको। चल, हम्म, ठीक है, तो जैकेट इसमें पहन ले, हाँ सर। iOS चेंज करना पड़ेगा मुझे, कौन? राइट। सो इस केस में हमारा क्या पहन हुआ ले। कि फाइल को मैंने लॉग इन कर लिया, क्योंकि इसका हमारा सेम नेटवर्क में है, देन इट इज गोइंग टू बी वर्क। सो देखो यहाँ पे एक श्योर मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हम लोग। तो ये तो इंटरफेस का हो गया, इंटरफेस मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशंस देखो यहाँ पे। ये क्या चेक सो करना है? यहाँ पे जो पोर्ट वन है, यहाँ पे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इट इज ऑल्सो राइटिंग पोर्ट वन इज द मैनेजमेंट इंटरफेस, इफ द मैनेजमेंट इंटरफेस isn't configured use the CLI to configure it. So port 1 by default coming as a management आज मैं interface, 2 बजे आया इसलिए ना, तो मेरे को फोन कर दे, कहाँ है तू? इसलिए port 1 is coming with a hardcode IP address, but if it is not coming for some model of the version, you just have to configure in this message, इस तरीके से मैंने अभी किया, right? And you can just define the rest of the configuration. So मतलब स्टैटिक मोड पे लेना है, उसके बाद ही वो कॉन्फ़िगर होगा, हाँ मतलब हाँ, जनरली। उसके बाद ही ओके। you can do the configuration। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कहीं तो होगा इसका, लेट आई विल शो लेटर से, इसमें हमारे पास पूरा एक एक स्टेप लिखा होगा कैसे इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आई नीड टू फिगर सर आउट। ये ओएस 5.6 है सर, शायद इसमें हाँ इसमें डिफरेंस है नहीं कि होगा, राइट, 5.6 है। इसमें हाँ, ये अलग अलग ये बुक अपने मैंने खोल 7 लिया। हाँ मैं अभी 7 वाले एक में बार, मिल जाएगा अपने को। हाँ एक बार बस इसको देख लूँ क्या स्टेटस है इसका। लेट मी सी वन मोर टाइम, एडमिन एडमिन, अरे सो सर यस password यस, blank ना. सर सपोज एक पोर्ट वन अगर फॉल्टी हुआ, तो हाँ हमें हाँ, बस वो इन दिस केस हमें वो मतलब हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा या बस पोर्ट ही चेंज करना पड़ेगा? नहीं, इफ द पोर्ट इज गेटिंग फॉल्टी राइट फॉर सम रीजन, तो हार्डवेयर का इशू है, तो देयर इज नो वे कि हम पोर्ट निकाल के पोर्ट रिप्लेस कर दें। हमारे पास फिर हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा, अगर वो पोर्ट आपके लिए क्रिटिकल है तो, उसके बिना काम नहीं चल रहा है तो। But we have the some of the port which is not in running, then we can use this port setting यस in यस those port ना. यस, वी कैन यूज दैट पोर्ट, बट आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे पोर्ट वन चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में तो कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। First we need to cross cutting, sir, so we use n number of port हाँ for the service. हाँ हाँ हाँ, उस केस में तो आपको करना पड़ेगा, एल्स देयर इज नो नीड, बेसिकली हेलो नो नीड। हेलो सर, मतलब ये जो सर 14 गेट है, हाँ हाँ, यस प्लीज, वन बाय वन, गो गो अहेड विद दिस।
सर ये 14 गेट है तो उसमें ऑलमोस्ट मॉडल में इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा या फिर डीएचसीपी मतलब डीएचसीपी से ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा या स्टैटिक से, मतलब जैसे कि पालो अल्टो वगैरह है जिसमें डिफॉल्ट पोर्ट वगैरह कुछ आता होगा, जैसे सोपोस में आता है हाँ उसमें भी वन। आता है, हाँ उसमें भी आता है। तो इसमें मतलब इसमें हर मॉडल में इस तरीके से होता है या फिर दूसरे मॉडल में भी मतलब डिफॉल्ट आईपी नहीं, आता है? if you are going to purchase the hardware, you will get the default IP address 192.168.1.99। ये आईपी आपको मिलेगी ही मिलेगी। That is going to be use। आप मैनेजमेंट इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करो। That is port 0 is acting as a management interface। आपको यही पोर्ट मैनेजमेंट इंटरफेस का यूज होता है। आपको कनेक्ट करना, आईपी आपको हार्डकोडेड मिलेगा और जस्ट हैव टू कनेक्ट योर पीसी एंड जस्ट आपको लॉग इन करके आपको फायरवॉल पे जियो एक्सेस ले सकते हो। हम्म, अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो तो दिस आईपी विल बी नॉट अवेलेबल, यू हैव टू कॉन्फ़िगर लाइक आई हैव डन राइट नाउ। अच्छा, तो वर्चुअल हाँ आईपी जो मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट है उस पे डीएचसीपी उस पे अनेबल होगा और हाँ जो वो इनेबल होगा। हार्डवेयर है तो उसके अंदर ये दिया होगा। ओके हाँ देखो जैसे ओके ये ओके। मैंने अभी लॉगिन किया, देखो यहाँ पे शो सिस्टम इन्फो इंटरफेस, देखो यहाँ पे 170 आईपी मिल गया। सो लेट मी जस्ट लॉग इन। डन। सो अपने आप डीएचसीपी से आईपी उठा लेगा क्योंकि जिसको मैंने कनेक्ट किया क्लाउड से डीएचसीपी से कनेक्टेड है। तो अब मैं इसको लॉग इन किया इस फायरवॉल को। सो यू विल सी दैट it is asking to begin firewall setting, leave it the FortiGate firewall, right? Okay एंड ओके। देखो ये इसका अच्छा लुक आ रहा है क्योंकि हमने अपने लोकल सिस्टम से लॉग इन किया। दूसरा फार्मल को मैंने लॉग इन किया टर्मिनल से, वो अपने डिवाइस से किया विंडोज सर्वर से, तो थोड़ा सा तो छोटा व्यू आ रहा है बट सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो आप सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे इतनी चीजें हैं आपका नेटवर्क के अंदर जाकर। कोई हम एक एक चीज करेंगे कवर, हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, हाउ द इंटरफेस इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड, हाउ द स्टैटिक राउटिंग इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड, हाउ डीएनएस इज गोइंग टू बी, हाउ पॉलिसी इज गोइंग टू बी, हाउ नैट इज गोइंग टू बी, हाउ द क्लाइंट टू साइट वीपीएन, अदर हमारे आईपीएस आईडीएस यूटीएम फीचर, हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन, वो सारी चीजें हम करेंगे। अगर सर इसके आईपी एक क्वेश्चन और एक था कि इसमें मैक्सिमम वीपीएन हम कितने बना सकते हैं, आईपी मैक्सिमम सेक वीपीएन, वीपीएन वगैरह? हाँ तो दैट क्वेश्चन यू सी हियर, थ्रूपुट तो हमने यहाँ देख लिया राइट। हाउ मेनी थ्रूपुट एसएसएल वीपीएन हमारे पास थ्रूपुट ये है। एंड डेटा सेट में होगा हाउ मेनी मैक्सिमम वीपीएन्स कैन बी क्रिएटेड। Means how many maximum site to site VPN we will be यस यस able. यस 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 टनल यस टनल यस। आई, Yeah. यस पालो अल्टो में हमारे पास डेटा सेट में है। सो आई नीड टू चेक द डेटा सेट फॉर ऑल द डिवाइस। सो एक मिनट इसमें देखता हूँ एक बार डेटा और सर सेट। दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि जैसे कि सोपोस फायरवॉल है, सोपोस फायरवॉल में एसएसएल वीपीएन वगैरह हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके अंदर फ्री क्लाइंटों का ऑप्शन जो है वो फ्री में दिया हुआ है, मतलब वो एसएसएल में फ्री, तो इसमें चार्जेबल रहता है एसएसएल वीपीएन? हाँ इसमें तो आपको जैसे आपको मॉडल के हिसाब से लाइसेंस मिलता है राइट, तो उतना ही सपोर्ट करेगा और वो सारी जो फीचर आपको करेगा आपको सपोर्ट। मतलब इसमें लाइसेंस लेना पड़ता है, वो चार्जेबल होता है? कुछ तो लाइसेंस आपके डिवाइस मॉडल के साथ आती हैं जो बेसिक लाइसेंस है, मगर आप कुछ एडवांस लाइसेंस लेना चाहते हो तो यू जस्ट हैव टू पे फॉर लाइसेंस, जैसे नहीं, FortiGuard वगैरह। मैं खाली एसएसएल की बात कर रहा हूँ। एसएसएल वीपीएन जो है सोपोस के अंदर फ्री दिया हुआ है, उसमें आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। In firewall also it is come with a firewall because I am using 200F series firewall in my organization. So the SSL VPN as well as IPsec VPN license also come with that यस particular firewall. यस ओके या ओके। initially when you go to the quotation ना they include those licenses initially, right? बट ओके अर्लियर क्या होता था पहले फोर्टी का अगर आपको लाइसेंस नहीं चाहिए तो उसको आप वो मतलब आपको वो कर देते थे, क्या बोलते डिस्काउंट देते थे। Yeah. बट नाउ दे आर ऑफरिंग इन द सेम रेट सो ताकि लोग डिस्काउंट न मांगे। यू विल गेट दैट, कुछ भी फ्री नहीं होता, देयर इज नो लंच फ्री राइट, बट आपको पे करना पड़ता है। एक बंच बना के देते हैं सर, पूरा पैक हाँ प्राइस डिसाइड करते हैं। हाँ ये पूरा इनका बॉम्ब आता है एक पूरा ना, उसमें देते हैं आप लोगों और ये थॉट दैट वी गॉट अ को। फ्री। हाँ सो देखो फायरवॉल पॉलिसी जितना आईपी से थ्रूपुट ये रहा, वीपीएन टनल देखो ये रहा, देखो 40,000 इस मॉडल के अंदर बना सकते हो टनल, और 2,60,000 आप बना सकते हो क्लाइंट वीपीएन। इस तरह से डेटा सेट आपको देखना पड़ेगा कि कितने वीपीएन टनल बन सकते हैं, कितने आपके क्लाइंट के टनल कनेक्ट हो सकते हैं फायरवॉल के थ्रू। गॉट आंसर ओके रितेश? So you ओके just ओके have डन to सर। go individual file data set and then you will find that all the information. So डन सर डन। it is going to give some kind of information right this way. ठीक है। सर सर
हाँ जी, बताइए। ये फोर्टिगेट का जो वेबसाइट है प्रोडक्ट लाइन का, तो उसमें बस एफ और जी सीरीज के फायरवॉल दिख रहे हैं, और ई और डी सीरीज के फायरवॉल एंड ऑफ लाइफ हुए या एंड ऑफ सर्विस हुआ है, मतलब कैसे पहचान सकते हैं, मतलब एफ और कौन से दिख रहे हैं आपको? एफ और एफ और जी, ये दो ही फायरवॉल दिख रहे हैं मतलब प्रोडक्ट लाइन में, तो और हाँ, डी तो और बाकी तो देखो ना, ये देखो, ये लेटेस्ट अभी नवंबर का ही है मैट्रिक्स, तो दिस द लेटेस्ट फायरवॉल। इसके अलावा पहले का सारा आउट ऑफ द लाइफ, आउट ऑफ द सेल हो गया इनका। पुराने फायरवॉल हो गए, आउट ऑफ द मार्केट हो चले गए। अच्छा, मतलब एंड ऑफ सर्विस हुआ है उसका, हाँ, एंड ऑफ एंड ऑफ लाइफ। सर्विस, या सो ये ओके। हमारे पास देखो, ये प्रोडक्ट लाइव जो यहाँ बेच रहे हैं लोग, सपोर्ट होगा शायद उनका अभी। एग्जैक्ट मुझे चेक करना पड़ेगा किसका किसका प्रोडक्ट साइकिल क्या है, बट यस, आपका जो प्रोडक्ट वो नहीं दिखाते हैं वेबसाइट पे और लेटेस्ट रिलीज में, जो वो मतलब दे आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू फ्रॉम देयर। और सर एक दूसरा एक क्वेश्चन था, जो ये iOS रहता है मतलब फर्मवेयर रहता है, उसका जो एक्सटेंशन रहता है वो केवीएम रहता है क्या, मतलब जैसे सिस्को में बीन रहता है, मतलब एक। फाइल टाइप। हाँ हाँ, मतलब वो जो iOS फर्मवेयर रहता है। एक्सटेंशन। हाँ हाँ, वो एक्सटेंशन मतलब इस इनका केवीएम रहता है क्या, मतलब। केवीएम और नहीं रहता है, क्या विल रहता एक्सप्लेन। है? यस प्लीज कम, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन प्लीज? Yeah, one second. I'm going to log in into the my firewall. So के it's हाँ के loading. केवीएम मतलब अपना इसमें चलाने के लिए बोल रहे हो ना, जीएनएस में? हाँ हाँ, जीएनएस में, जीएनएस। जीएनएस में नहीं, जीएनएस में हमारे पास वो क्यूकाउ फाइल है, क्यूकाउ फाइल है। नहीं, जीएनएस एडवेंच के अंदर तो नहीं है, लेकिन अपने ईवेंजी, ईवेंजी के अंदर वीएम, है, ईवेंजी हाँ वीएम के अंदर क्यूकाउ फाइल हम यूज करते हैं, नहीं, उस पर वीएमवेयर चलाते हैं। वीएमवेयर में भी चला सकते हो, वीएमवेयर में भी चला हाँ सकते हो उसको। सर, मतलब हम्म हमारे पास कुछ हार्डवेयर फायरवॉल है जैसे 90G का हम्म। फायरवॉल है, तो उसके अंदर जो हम iOS डालेंगे तो उसका कुछ एक्सटेंशन होगा क्या, मतलब ऐसा कुछ। नो नो, इसके अंदर एक बिल्ड वर्जन आता है, जैसे सोपोस के अंदर भी आता है कि इसका एक हाँ मतलब वर्जन आता है, बिल्ड वर्जन 2360 है, या फिर उसका जो फर्मवेयर वर्जन है वो एक डेडिकेटेड नंबर आता है उसका। देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ बी इन केवीजे और समथिंग एल्स। हम्म। ओके। जब हम वेबसाइट में जाते हैं ना, वहाँ से हम डाउनलोड करते हैं ना, मतलब ये iOS, तो वहाँ से बहुत सारा जो एक्सटेंशन दिखता है, मतलब तो हम मतलब एग्जैक्ट हार्डवेयर में कौन सा यूज करते हैं और क्लाउड में कौन सा यूज करते हैं, मतलब ये थोड़ा जानना था मुझे। क्या क्या दोबारा पूछिए, आप दोबारा क्वेश्चन नहीं, पूछिए। जब हम फोर्टिनेट फायरवॉल की वेबसाइट में जाते हैं ना, तो वहाँ से हम iOS डाउनलोड करते हैं, वहाँ से हाँ ऑप्शन हाँ, रहता है बिल्कुल मतलब। बिल्कुल करते हैं, हाँ हाँ, करते हैं। तो वहाँ पे है ना, मतलब ऐसा एक्सटेंशन आता है केवीएम और बहुत सारे रहते हैं, तो आप बात कर रहे मतलब हैं forticloud.com पे बात कर रहे हो ना, जहाँ पे फोर्टी क्लाउड पे जाके हम iOS डाउनलोड करते हैं, राइट? हाँ हाँ, वहाँ से हाँ हाँ। डाउनलोड करते हैं, तो हार्डवेयर में कौन सा iOS यूज होता है, और जो क्लाउड रहता है ना, तो क्लाउड में अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल AWS क्लाउड में हमें फोर्टिगेट फायरवॉल डिप्लॉय करना है, तो वहाँ पे कौन सा मतलब यूज करते हैं हम iOS, ये थोड़ा जानना था। नहीं, आप कोई भी लेटेस्ट iOS डिप्लॉय कर सकते हो, सारे क्लाउड प्रोवाइडर सपोर्ट करते हैं, कोई भी कर सकते हो, आपको सिर्फ मतलब आपको उस पे। मतलब जो हार्डवेयर पे हम अपलोड करते हैं, मतलब वही यूज करना है ना क्लाउड में, ऐसा हाँ, है ना। सारे सपोर्टेबल होते हैं, जितने इमेज आजकल बना रहे हैं ना लोग, दैट इज हाँ हाँ। ऑल इमेज हैविंग द एडवांस फीचर्स, एंड दोज इमेजेस आर कंपैटिबल विद द हार्डवेयर इन द वर्चुअल एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मैंने तो अभी देखा नहीं है ऐसा कुछ, बट इट कैन बी डिप्लॉयड। Whether it ओके। is a software based or hardware based, iOS remaining same. यस, iOS is going to be same, there is no problem with iOS। अगर आप 7.2 और समथिंग आप डिप्लॉय करो हार्डवेयर पे, सेम iOS आप डिप्लॉय कर सकते हो वहां पर, तो बस इन मतलब कि डिप्लॉयमेंट। अपने को iOS पे ही काम करना है ना, whether it is सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। यस, आपको फ्लेवर तो ही मिलेगा ना, आपका एंड्रॉयड एक iOS, राइट? जस्ट थिंक अबाउट दिस वे, आपके पास एंड्रॉयड एक iOS है, आप उसको एप्पल के मोबाइल में डाल दो अगर सपोर्ट करता है, या फिर आप सैमसंग मोबाइल में डाल दो, iOS iOS ही रहेगा, बस प्लेटफॉर्म चेंज हो गया उसके। अब जो क्लाउड है वो भी तो एक हार्डवेयर ही है, दैट इज ऑल्सो हार्डवेयर, ऐसा नहीं है कि नहीं, उसमें आपको छोटा सा स्पेस मिल जाता है, देन यू आर गोइंग टू डिप्लॉय द योर क्लाउड। यस सर, यस। या यस। okay, so I believe that's good session for today. We'll continue from here, from the next class. You all get the information. Yeah. सर, सर एक लास्ट क्वेश्चन Yeah, सर yeah, मेरा एक but- क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बताइए बताइए। मैंने चार्ट में डाला था, सपोज मैंने अभी 40F मॉडल का बैकअप लिया है, हाँ हाँ। और ये सेम बैकअप मैंने अपलोड करना चाहता हूँ 60F में, हम्म। तो ये सब अपलोड हो पाएगा ना, नहीं होगा सर ये? Configuration is going to be uploaded 100%, there is no problem, config आप अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे अगर हमारे कुछ पास Palo Alto firewall भी, अगर आपने 220 से बैकअप लिया है एंड यू वांट टू अपलोड दैट इज a 440 firewall, it can be uploaded, बट आपका दो प्रॉब्लम हो सकती है।
मान के चलो कि देयर इज अ 10 gig कॉन्फ़िगरेशन, राइट? अगर आपका हार्डवेयर मिसमैच हो गया, कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच हो गया, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वहां पे। जैसे यहाँ पे 1 gig का वो इंटरफेस है मेरा एकदम। डाउट था, वो मेरा डाउट हाँ था कुछ। हाँ, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी, सो द बेस्ट प्रैक्टिस ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट विद द सिमिलर काइंड ऑफ इंटरफेस जो है, सिमिलर काइंड ऑफ लाइसेंस, देन इट इज गोइंग टू बी कंपैटिबल। बट अगर थोड़ा मिसमैच होता है तो देन यू हैव टू ट्रबल शूट, यू हैव टू फिक्स इट, और यू हैव टू डू द मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। कई बार एरर आते हैं, राइट? सर अभी सर क्लास कंटिन्यूज रहेगी ना? Yes, yes, class is going to be continue from here, okay? So ओके you guys will get the information from the Abhishek sir very soon, right? Okay, Pankaj, last question by my end. Uh, Hmm. to be honest, I am the candidate who having that 1 year experience in the FortiGate, and also I have the NSC 1, 2, 3, 4 चारों एग्जाम क्रैक किए मैंने. Are good, very nice. या बट क्या है ना कि मतलब यू ऑल्सो नो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरे राइट्स नहीं मिलते फायरवॉल के अंदर. Mm-hmm. Okay, so मतलब I can create object, I can create policy, I can create site-to-site VPN, SSL level, all these things in the firewall, in the FortiGate firewall. So I am also word with that Abhishek sir. So I would like to go with that Palo Alto firewall. Mm-hmm. What do you think, मतलब? So if I go with the Palo Alto firewall, or I can start to continue with the NSC 5 or 6. What would you suggest to me? See, I told earlier, right? So if you love, you have already experience in the FortiGate firewall, right? And you've Yes, already done the NSC 4 level and of still I'm certification. working on it. Yes, still you're working on it. So you're having the good knowledge, right? So I would suggest go with the Palo Alto I firewall. don't think so If it's a you, good knowledge, but it's a yeah. sufficient to do to tackle the ticket. Yeah, no, no. It is always a good platform to just, move to the next level, but gradually you just have to little bit, go deeper and deeper while learning this, FortiGate as well. But it's a good start if you are already having the good knowledge in the FortiGate. So you always, I would suggest just migrate in the Palo Alto. Okay. So where you can just get the more deep knowledge and all, right? And if you really want, I want to just go next level in the FortiGate. So we are here, whatever knowledge we have, just try to exchange all together. So that is going So to one more just, thing also, कि you are providing the training based on the only firewall on the step of the firewall, like NC 1, 1, 2, 4, 5, 6, the different certifications there. So according to you provide the training. NSA 4 is fully going to be covered here because we are talking about the like the network security deployment only, right? And some advancement. No, we are not going to cover the SD-WAN features. We are not going to cover the wireless. We are not going to cover the APs, not Yeah. switch. So that all related to the firewall proxy, whatever the feature we have, Forti client, right? Whatever we can do the Analyze test the and 40 yeah, yeah, manager. yes, based on the license, whatever we have, maximum thing what we can do, that we all going to. So base core in the security. So if I go in the more a little bit here in the, let me little bit share my screen, 2 minutes, so you guys can understand. Let me share it. Okay. So if you go here, you can see. So 1, 2, 3 are free. You can do anytime. Yeah, and You 4 can, is you can, payable. yeah. So 4 is here. So network security administrator, right? So you learn like the how the FortiGate device support, especially corporate network configuration, day-to-day monitoring, Yeah, operation. yeah. How This to is create going a to be, policies, yes, object, and yes, all these yes. things. Yeah. And if you go in the like the 6 and 5, so recognize you have to implement network security management and let us the FortiGate security devices, curriculum requirement who can require expertise centralized management. So 4 and 5, where in 5 we just have to understand about the Forti manager, Forti client, Forti analyzer. That is going to cover here. But again, it's part of the network security. But if you go in the 6, right? 6 is like the recognize the comprehensive skill of fabric product beyond the firewalls, right? So that is beyond the firewall. Like you just have to go with the SD-WAN solution. You just have to go for some kind of the wireless solution. You just have to understand some advanced feature of this, cloud feature. Then it is going to come in the 6. सर 4 So तक तो अपना कवर हो ही जाएगा ना सर? 4, 5 ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, 4 तो 100% कवर होगा, इट इज लाइक द 4 तो कुछ छूटना है नहीं, राइट? 4 इज एंड 5 जस्ट FortiGate एनालाइजर मैनेजर, दैट वी जस्ट हैव टू चेक लाइसेंस कैसे मिलेगा, थोड़ा लाइसेंस का पंगा रहेगा, बट विल सी कैसे उसको कवर करना है, ठीक है? विल ट्राई टू सी एंड विल डू दैट, ओके? सर हम्म, सर एक हाँ क्वेश्चन था, ये मतलब ये वीडियो अगर देखना है तो इसका एक्सेस रहता है क्या में? हाँ हाँ, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा आप लोग को, कोई टेंशन की बात नहीं है, वीडियो एक्सेस की कोई दिक्कत है, आप लोग का ही अच्छा सेशन है पूरा। ये क्लास सर का मतलब वीकली कितना दिन होगा सर ये? हम 3 दिन करेंगे मिनिमम इसको, मंडे, सर अभी वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 days। तो अभी कल नहीं, अभी मतलब अभी नेक्स्ट कब होगा सर?
कल शायद हम क्लासेस का करेंगे। एक बार मैं अभिषेक से बात करता हूँ क्या प्लान है, जस्ट हैव टू टॉक विद सर अगर देयर। कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे ही कंटिन्यूस कर दीजिए कि। ओके चलो, आई नोट योर फीडबैक, लेट मी सी क्या कैसे करना, थोड़ा सा बस मुझे कल का समय दो एक बार, लेट मी टॉक विद द मैनेजमेंट एंड विल डिसाइड। ओके Okay, और and Where I ये got some information like batch schedule and future structure. that Abhishek sir will just provide all information, so you guys वीडियो can सर connect. गूगल ड्राइव पे मिलेगा क्या वीडियो? Yes, yes, Google Drive Yes, पे आता Google Drive will get also working on the application, so we'll provide the application, but still not fixed. हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर तक फिक्स हो, नए साल से पहले हमारा सब कुछ फिक्स हो जाए। So what about the Palo Alto firewall cells? And I also like to go with the Palo Alto firewall. So the batch, when will you start the new batch of the Palo Alto firewall? so this is the reason I'm just talking about 3 days for the FortiGate and 3 days for the Palo Alto. This is the Okay, plan okay, we are just thinking, right? okay. Right? So you guys can reach out on So this there is number. also in the certain level in the Palo Alto firewall like that Fortinet NSC 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's the same Yes, they are level having the PC, PCNSCA, PC, yes, PCNSCE, and I don't and know. PCNSC. So These that are the two candidate who certificated. have the certification of the PCNSC as well as Fortinet NSC 4, so it's good to stay in that market. Not good, very good. Very Okay, good, very good. yeah. It's a unique, right? These are the market trend So I right just now. plan to go with the PCNSC also. Yeah, yeah. So that is going to cover both syllabus is going to cover in the Palo Alto session. सर Okay, आगे के सर अपडेट के लिए कि व्हाट्सएप पे ही मैसेज आएगा, पता कैसे चलेगा क्लास का अगली का? That is going to be, update is going to be, you'll get update कांटेक्ट towards. नंबर अपडेट हो जाएंगे ना हमारे? Yes, 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 yes. You can reach out anytime to Abhishek sir. This is the number, okay? You can reach out to Abhishek sir. सर अभी फिलहाल मतलब वेबसाइट में ही मिलेगा ना ये वीडियो आपके GuiNet की वेबसाइट या ऐप अभी में? अभी ये भी वीडियो तो अभी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, राइट? सो अभी यूट्यूब मिल जाएगी वीडियो, बाकी भी जो हमारे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्लास हुए थे, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी प्रोवाइडेड। सो मंडे, संडे 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 तक सबको मिल जाएगा, वीडियो एक्सेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सर ये अभी अभिषेक सर ने आपसे बात करी होगी, मुझे थोड़ा सा इवेंट जी का थोड़ा बता देंगे बेसिक्स। EVNG पे how this going to be lab configured? You want to learn? Yes, yes. how to use the EVNG in short. चलो ठीक है, so what I'll do, I'll cover one lecture here. I already prepared this, okay? So let me show you. एक्चुअली मैं मेरे पास कोई बात नहीं, वर्सा कोई बात नहीं। SD-WAN का मैं कर रहा हूँ, तो मुझे Okay. मिल गया एक्सेस वगैरह लैब का, बट उन्होंने बना रखी है टोपोलॉजी, बट मुझे यूज नहीं करना आ रही है वो कैसे क्या करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, लेट मी जस्ट हाँ टेल। ओके ठीक है, मुझे लगा अच्छा वो आप पूछ Okay, रहे you हैं, have complete SOP to how to use the EVNG. सर आगे का सेशन आप लेने वाले हो या अभिषेक सर लेने वाले हैं? राइट? आई एम द ओनली गोइंग टू टेक द सेशन, ओके? Abhishek sir is a salesperson maybe. ऐसे ही चलेगा? अरे कर देना हेलो सब, सो वो कर देना आराम से। और सर सी टाइमिंग सेम रहेगा ना? यस यस 8 8 to 0 9:30, 170। let me, so you see here, so 8 to here 9 दिस इज वीकेंड या डे वाइज, व्हाट इज द शेड्यूल? that is most probably Monday, Wednesday and Friday, okay? And sir, once we complete that Palo Alto course na, so and if I decide to crack the exam of the PCNSC, so for that you also know that there is a different way the practical and that exam. Okay, so there are dumps is required to crack the exam, right? If I'm not wrong. So Yes, do you some people provide use that dumps to us, or we need to be get it by the web? to get by where? By the any particular website, because in market there are the lots of the website who giving that paid. Abhishek sir will basically guide on it, okay? He Okay, having some good experience, right? okay, So how okay, to get and where to get, so you just have to connect with him, okay? okay. So see, who was asking this, sir? मी तरुण। Okay, Tarun, आप यूजर नेम डाल दो अपना and password, and then you just have to ओके select the HTML console here, right? And you have ओके to sign in, right? आपको यहाँ पे वर्सा SD-WAN का लैब दिख जाएगा, you just have to ओके open this lab, and बस आपको स्टार्ट करके डिवाइसेस आपको वीडियो वॉच करनी है, and you just have to do step by step this, आपको डिवाइसेस ऑन करनी है, जो जो आपको कॉन्फ़िगर करना है, एक एक करके इस पे क्लिक करके ऑन करते जाओ, right? ओके ओके So then you have to do, but while doing the lab practice, you just have to let me just show you again, आपके Means, यूजर नेम डालने से matlab, indirectly you can say sir, that if I go with the PCNSC and if I stuck in the Fortinet, so I can have a access of this Fortinet lab also, na?
Technically, no. But if you need like some additionally support, so we'll think Okay. how can we do. But technically, you'll only have the access of the Okay. Palo Alto So if Firewall I Labs. purchase one particular course, so then only Yes. regarding this course I can take that lab access. Yes. So, Okay. Tarun, yeah, sorry, Patil, I just cut your Yeah, word. please, So please. you just you have to make sure you select the HTML console while logging. That's all. Okay. Okay, Yeah. okay. Okay. So I was using native console. No. You just have to select the HTML console, no native. Okay. ओके तो उसमें मुझे जाके सारे इनेबल करने वाले डिवाइसेस Just you have to, आपने इसको ऑन कर लिया, राइट? आफ्टर ऑन करने के बाद you just have हाँ to start the devices, not enable. You just have to ओके ओके start the ओके devices. स्टार्ट तो फर्स्ट स्टार्ट आप करके कंट्रोलर डबल क्लिक करूंगा तो वो ये ओपन हो जाएगा। हाँ, ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर को पहले आप कॉन्फ़िगर करना, हेड एंड डिप्लॉयमेंट फर्स्ट करना, ठीक देन यू है जस्ट गो द ब्रांच। सो आई वुड सजेस्ट डोंट गो इन द हरी, यू हैव द लैब एक्सेस। आप पहले स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखो, समझो, देन यू स्टार्ट डूइंग दिस ऑल, राइट? ओके ओके नहीं नहीं मैं स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा हूँ। अब मैं पहुंच गया हूँ हेड एंड वाले वीडियो पे। तो हाँ हेड एंड का जब करना है तो पहले ये हेड एंड के डिवाइसेस में ऑन करूंगा, हाँ, उसके बाद फिर उन पे स्टार्ट कर सकता हूँ, राइट? राइट। पहले हेड एंड ही अब कॉन्फ़िगर होगा। तो उस पे मेरे को अगर कुछ मतलब मतलब स्टार्ट से स्टार्ट करना है तो कैसे करूंगा? मतलब उस पे तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होगा ना सब। नहीं, देयर इज नो कॉन्फ़िगरेशन, इट्स न्यू फॉर यू, नथिंग ओके ओके कॉन्फ़िगरेशन। ओके ओके या ओके फाइन फाइन गॉट इट। देयर Okay. इज नो Pankaj, should कॉन्फ़िगरेशन। I get any demo batch of the CCNP? Yeah, definitely you'll get the more demo batch. No need to worry about. Okay, Okay. you'll सर get So वर्षा everything. I एसडीएन need भी थोड़ा to कवर हो complete that, सकता है क्या? Abhishek sir. हाँ, Versa SD-WAN. कोई हम्म specific question होगा, I can guide in Versa SD-WAN. A specific question, right? Because I'm the instructor of the ओके, Versa SD-WAN, Cisco SD-WAN, Palo Alto, so everything I'm क्योंकि Zscaler, मेरे यहाँ everything. पे वर्षा एसडीएन भी यूज होता है ना ऑफिस में। So a specific question, but if you want to understand whole thing, so that is not possible. You ठीक just ठीक, have to, ओके। complete this, entire trainings. ये फोर्टिनेट वाला 2 मंथ्स में हो जाएगा कंप्लीट? Yes, it is going to complete in within 2 months. ओके। विशाल सर जस्ट लास्ट थिंग मेरे को एक पूछनी थी। Uh-huh. पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कैसे करेंगे इसमें वर्षा में? मतलब कुछ ऑप्शन रहता है क्या जैसे कंट्रोल उस पे डायरेक्टर पे कि जहाँ पे हम उसमें पीएफआर हमारे इनेबल कर हमारे दें? पास हमारे पास इसमें पॉलिसी बेस्ड ही राउटिंग पूरी होती है। इसको बोलते हैं ट्रैफिक स्टीयरिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको। नहीं नहीं वो तो सा ठीक है। अब जैसे मान के चलो यूजर्स हैं वो बोल रहे हैं हमें नेटफ्लिक्स जो है वो यूरोप रीजन में चलाना है और यूट्यूब हमें इंडिया में चलाना है, हाँ, तो तो उसमें वो हम फायरवॉल कैसे? फीचर है, उसमें एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल फीचर भी है, उसको आप इनेबल कर सकते हो। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्सा एसडीएन, बट देयर इज अ फीचर यू कैन यूज दैट। वो सिक्योरिटी का कंपोनेंट है, बट आप ओके उसमें उसके सर्विसेज को यूज कर सकते हो। सिस्को एसडीएन में भी ये सारे फंक्शनलिटी है। दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी मॉड्यूल। तो सो उसको यूटिलाइज करके आप कर सकते हो। उसमें एप्लीकेशन बेसिस पे आप ब्लॉक कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। जो हम हम्म FortiGate फायरवॉल में, Palo Alto फायरवॉल में बहुत लाइव सीखते हैं कैसे इसको करते हैं, बट स्टिल इन हम्म द SD-WAN आल्सो वी कैन डू दैट। ओके ओके। तो इस पे डायरेक्टर पे कोई ऑप्शन रहता है क्या जो पीबीआर करके कुछ कि उसको इनेबल रखना होता है तो उसकी वजह से? आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करोगे ना, जब ट्रैफिक हम्म स्टीयरिंग में जाओगे, पॉलिसी क्रिएशन में जाओगे, तो उसमें आपको दिख जाएगा फायरवॉल के कैसे। फायरवॉल के एक होगा उसमें, अरुण सर ने लिया होगा, आई थिंक अर्जुन सर ने, राइट, हाउ इट इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर एंड ऑल। तो यू विल ओके गेट दैट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। आपके काफी सीनियर बैच के लोग, मतलब काफी सीनियर रिसोर्सेज हैं उस बैच में, जिस बैच की वीडियो एक्सेस आपको मिली है, राइट? सो यू विल हम्म। गेट द ऑल आंसर्स, राइट, लाइव, कि कैसे वो बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट? चलो चलो ओके थैंक हाँ, यू। जस्ट डू इट, एंड बाकी तो हम यहाँ बात करेंगे ही, राइट? विल सी इफ एनी चैलेंज आता है तो, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ऑल राइट गाइज, हैप्पी इवनिंग टू ऑल, सी यू अगेन।